All right. So we are live. एक बार ऑडियो और माइक चेक कर लेते हैं. चेक हो गया. Okay, so let's start. अरे चार्ट सामने रखना भूल गया मैं. ओके, सो वॉचिंग तो 2 आ रही है भाई. कौन देख रहा है छुप के? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अरे TCG. अच्छा, ये मैंने ख़त्म ही नहीं किया. मैं देख रहा हूँ सिल्वर भाई कैसे हो. बस बढ़िया डाक लियो. तुम बताओ कैसे चल रहे हैं एग्ज़ाम तुम लोगों के? ठीक है, तो आज का प्लान काफ़ी सिंपल सा है. पहले कमिशंस, देन आर्कॉन क्वेस्ट. भाई साहब नाइस. डाक लियो. मेरा एग्ज़ाम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है. अच्छा हाँ, वो तो 12 से होने वाला था ना.
राइट, अब यहाँ के लिए सबसे पास का मैं यहाँ से जाऊँगा। आज मैंने एक नई चीज़ डाली है, ये क्वेश्चन वाला मुझे दिख रहा था Q&A। लेट्स सी अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन, अच्छा चैट में बाकी लोगों को क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे, फ़ायदा क्या हो गया फिर इसका। अभी तो टाइम टेबल भी नहीं आया कि CC वाले एग्ज़ाम कब होंगे। जे किस बात मैंने पूछा था क्वेश्चन। मैं वही देख रहा हूँ भाई, मैंने डाल तो दिया, मैं देखूँ कहाँ से क्वेश्चन सब, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है देखने का। एक मिनट, मैं शायद फ़ोन में ही देखना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन अलग से खोल के क्रिएटर स्टूडियो। तभी ये फीचर ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता लाइव स्ट्रीम के टाइम, ये फीचर कचड़ा कर देता है भाई। भाई पूरी अरेबिक वाइब है यहाँ पे। ठीक है, मुझे जाना है उस साइड, आराम से जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है भाई। इससे सही तो पोल वाला ही फीचर है, पोल कम से कम मैं देख सकता हूँ कितने वोट्स हैं, तो दिख भी नहीं रहा। लेट्स सी चार्ट का कहाँ पे आता है ऑप्शन। डार्क लियो मैंने पूछा था, स्कारा पुल किया था सिल्वर भाई। नोप, मैंने पुल नहीं किया, बस मैंने ऑल्टरनेट आईडी में ट्राई की थी अपनी जो दूसरी आईडी है, बट आया नहीं भाई। वैसे भी पुल मैं नहीं करने वाला था इसके बैनर पे, सो इट इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन फॉर मी। आ गया तो भी सही है, नहीं आया तो भी सही है। अरे 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 भाई, मैं क्वेश्चन कहाँ से देखूँगा, ये तो दिक्कत आ गई। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ गो लाइव में, साइनो जैसा ही है स्कारा सिल्वर पर वो मास्क नहीं लगाता एलिमेंटल बर्स्ट में। If you're not sure what to do next, how about I take you on a walk? ये तो वॉक पे ले जाती रहती है, इसे बताओ भाई, अब लोग स्कारा मूश नहीं है जो वॉक पे चल पड़ेंगे कभी भी। इसने लिटरली स्कारा मूश को पाल रखा है। आज देखेंगे स्टोरी क्वेस्ट में क्या चल रहा है। ओके, मुझे एक जगह तो मिली है जहाँ पे मैं शायद देख सकता हूँ। मैं ना जस्ट एक मिनट, ये मैं क्वेश्चन वाला फीचर ही ऑफ कर देता हूँ अगर हो पाए तो, काफ़ी कचड़ा हो रहा है इससे। अरे आजा भाई, चैट स्क्रीन आजा। टाइम में आगे पीछे होता स्कारा। हाँ अच्छा, टाइम में आगे पीछे होता स्कारा, हाँ वो तो मुझे पता है, वो पेड़ देखने जाएंगे टाइम में पीछे, कुछ तो होने वाला है इसमें। बाकी भाई और स्पॉइलर ड्रॉप मत करो, मज़ा ख़राब हो जाता है खेलने का फिर। ओके, मैं कमीशन स्टार्ट करता हूँ जब तक ये लोड हो रहा है। फ़ोन में देख नहीं सकता मैं जल्दी से, वो पीसी वाले बैक एंड का स्ट्रीमिंग का। अरे अरे ऐसे कैसे भाई, अब उड़ेंगे ना मस्त, इतनी मेहनत से जीता है पंखा हमने। भाई देवे डाक लियो, अभी तक किया है यार कॉन्क्वेस्ट? अच्छा हाँ किया है, तभी तो स्पॉइलर दे रहे हो भाई। इलेक्ट्रो से एनिमो कैसे बनता और कैसे सबको ऐसा ही वो एलिमेंट पावर कैसी मिलती, सबको वो भी पता चलेगा। ओके, मतलब मेजर डेवलपमेंट है, मेजर इसमें वो है, क्या कहते हैं उसे, लोर स्टोरी डिटेल्स। अच्छा भाई, पंचिंग बैग अभी दिखाते हैं तुम्हें, बड़ा पंचिंग बैग आ रहा है तुम्हें। मरो
तू भी मर। Shine down. आ जा भाई, आराम से आ जा, मैं कहीं नहीं जा रहा। Commit it to memory. Share my knowledge. There is no escape. I'm getting sick of it. This way. Shine down. Grow. खत्म। मैं सोच रहा था आपके वर्ल्ड में आपके रुक्षवा मशरूम कलेक्ट कर लूं, बट जब आप ओपन किया तो 200, बट जब बैग ओपन किया तो 200 हो गया था। ओके नाइस। रुक्षवा मशरूम कौन सा कैरेक्टर लेता है भाई? किसे बिल्ड कर रहे हो? What they say is true. You have to see the रुक्षवा भैया, शावा शावा मशरूम। अरे यार, ये वीजल थीफ वाला फिर आज भी दे दिया इन्होंने। world for yourself to appreciate. अरे भाई, स्कारा रुक्षवा लेता है भाई। फूल फार्म करना ना बड़ा ही बेन है भाई। या तो तुम वो ले गए, चलो स्कारा को लगता है रुक्षवा। ये 3x कॉम्बो। जब भी कोई बंदा लगातार 3 या 4 बार मैसेज कर देता है तो स्ट्रीम लैब्स उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस करता है भाई। मतलब मेरी स्ट्रीम में तो ईजी है भाई 3-4 करना। कुछ कुछ स्ट्रीम्स होती हैं जिसमें लगातार 2 मैसेज भी नहीं जा पाते। चलो मैं सबके क्वेश्चंस लास्ट में देखूंगा स्ट्रीम के, फिर ये कर सकता हूँ मैं। ये तो लग रहा है कल वाले कमीशन से कॉपी पेस्ट कर दिए यहाँ पे, इसलिए यार बोरिंग हो जाते हैं कमीशन ये जब रिपीट होने लगते हैं। बट सुमेरु के कमीशन तब भी सही हैं। एक होता है वो स्लाइम बैलून वाला इनाजुमा का, सबसे बकवास। नहीं उससे ही बकवास है। वो जो मॉन्स्टार्ड में होता है, क्या नाम है उस एनपीसी का, एलिन, जो पहले बोलती है सारे ये फोड़ के दिखाओ। जब फोड़ के दिखाओ उसे, अच्छा इतना ईजी था। जैसे अभी कूद के करेगी एलिमेंटल बर्स्ट। Everyone hold hands. चलो ये भी ख़त्म। ज़कारिया, इससे ही बात करेंगे। विजल थीफ भाई, टेलीपोर्टर के पास हुई हो। चलो एटलीस्ट एक टेलीपोर्टर पॉइंट तो है जिससे भाग के जा सकता हूँ मैं वहाँ तक। मैं सोच रहा हूँ चार्ट को उस साइड कर दूँ, खुद इस साइड आ जाता हूँ। यहाँ पे भी तो दिख ही रही है चार्ट। 3x कॉम्बो, आग वाला दिल। ऐसे कैसे डाक लियो भाई? तुम तो स्ट्रीम लैब्स की नौकरी खा जाओगे फिर। ये काम तो स्ट्रीम लैब्स का है भाई। Something on your mind again? Let's work through it together. 2 heads are better than 1. आई गेस ऐसे भी ठीक लग रहा है ना ये। यहाँ पहले ही सही था जो मैं उस साइड था।
अरे क्या टकरा के फूट गया मेरे से। अरे साइनो चलो चले जाए वहाँ पे। मस्त लग रहा है भाई, थैंक्स। ऐसे ही रखते हैं फिर इसको। और मैंने एक छोटा सा वो लोगो भी डाल दिया है, कितने लोग देख रहे हैं स्ट्रीम। भागो 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 भागो। एक ना एक दिन पहुंचेंगे। आजा विजल आजा भाई, ज़्यादा दूर मत भागियो। इधर गया, अब इधर जा रहा है, अब इधर जा रहा है, और ये रहा धप्पा। चल दोबारा भाग। अरे भाग ना। ये रहा, अब इधर जा रहा है, निकल। चलो भाई अब जकारिया से बात करते हैं। जकारिया स्कारा का वेपन पर 90 विश उड़ा दिया। वो इत्तो वाला वेपन मिल गया यार सिल्वर ब्रो। पूरे फेट्स बर्बाद हो गए। आई फील यू डाक लियो, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था योइमिया के टाइम। नाहिदा आ गई थी, फिर मैं वेपन बैनर पे गया, मुझे योइमिया का बो मिल गया। 70 पर इत्तो का सिग्नेचर वेपन मिल गया और 20 और उड़ा दिए, कुछ नहीं मिला। अब 162 प्रीमो जेम्स उड़ाते जा रहा हूँ कलेक्ट करके। ब्रो राइडेड शोगन है तुम्हारे पास? अरे जकारिया, ये तो वही जगह है जहाँ पे हम उसमें आए थे सब ज़ेरूस फेस्टिवल में, वो बीमार पड़ी थी। भाई ये प्लेस ना ऐसे छप गई है मेरे दिमाग में, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी थी यार वो। ऐसी स्टोरी कमी है यार इस गेम में, मतलब ऐसे इंप्रेशन छोड़े ना जब भी जगह में वो आर्कॉन क्वेस्ट याद आता है। राइडन है सिल्वर ब्रो, तभी तो स्कारा निकाल लिए भाई। करते रहो इत्तो के बैनर पे पल, वो भी निकलेगा। मस्त कैरेक्टर है, मतलब सही से बिल्ड किया है ना। स्पाइरल बस की एक टीम तो सेट है भाई हमेशा। जब मेरे पास सारे कैरेक्टर्स हो जाएंगे ना जो मुझे चाहिए, तब मैं इत्तो निकालूंगा। अभी गुड़गांव नहीं, क्या लिखा है ये, गुरगेन, गुड़गांव बोलेंगे। गुड़गांव दवाई लेके जाना है भाई हमें। वो खड़ा है। अरे यार कहीं पे भी चढ़ने लगती है उधर। स्पाइडरमैन कहीं की। अरे 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 क्या कर दिया मैंने? दवाई ले ले ब्रो, डर मत, कुछ नहीं होगा। कुछ हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है वैसे, पर होगा नहीं कुछ। नहीं रुका गया और इत्तो निकाल दिया मैंने। अरे भाई कर भी दिया, क्या बात है। ओ वेट, डेड शॉट। हे डेड शॉट, वेलकम टू द स्ट्रीम। मुझे लगा डाकलियो मुझे बता रहा है। राइडन है जब आई थी ना फर्स्ट टाइम, राइडन तभी पुल किया था, 180 फेट उड़ा दिए थे उसमें भी। मैंने फर्स्ट बैनर पे निकाल रखी है राइडन ना। मुझे इतना अच्छा नहीं लगा सिल्वर ब्रो, बस अब स्कारा का वेपन और मिल जाए मज़ा आ जाए। घंटी, स्कारा का वेपन इस घंटी। मुझे भी इतना पसंद नहीं, पर भाई स्पाइरल अब इसमें काफ़ी सही है। मतलब तुम एक टीम बना लोगे जियो की, तो सेकंड टीम के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। बस एक जियो का हीलर ऑल मिल जाए ना हमें गेम में। चल भाई 10 प्रीमो निकाल, बिन बाड़े की डिलीवरी कराया मैं तेरी। गैम्बल 10,000, लॉस्ट 10,000, नाउ हैव 73,000। ब्रो इतने सारे। जोंगली C6 कर लो भाई। जोंगली को C6 करने में मैं भाई सड़क पे आ जाऊंगा। सिल्वर ब्रो कैरेक्टर रिव्यू करते हो ना आप?
हाँ भाई गिरा दो यूआईडी, देख लेंगे। मतलब गिराने की ज़रूरत नहीं, फ्रेंड लिस्ट में तो ऐड कर लिया है मैंने। देखना कोई कैरेक्टर तो बोलो, अभी देख लेंगे। वही बात है भाई, अकाउंट रिव्यू सबसे लो एफर्ट कंटेंट है, बस देखो और कमेंट पास करो आर्टिफैक्ट पे, उसमें क्या ही दिक्कत होगी। भाग नहीं था, भाग। अब सिर फोड़। बूम। Add Astra app. एप्पल सॉस वाली Thank दे you दे। for नाहिदा चेक करो ना और बताओ क्या कर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ मैं। देखते हैं। ओ ठहर जा वेंटी, ठहर जा। हर बार एक ही कहानी है, कहानी बदलो यार। फाइनली लेवल 1 बैटल पास। भाई बड़ी मेहनत लगती है लेवल 1 करने में। ओके अरे क्या अचीवमेंट मिल गई। नीचे 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 नीचे। अरे टीसीटी की फुल फॉर्म पता है किसी को? टैग कार्ड गेम है या ऐसा ही कुछ होगा ना। टीसीटी की फुल फॉर्म मुझे नहीं पता। डाकली तुम्हारा इन गेम नाम क्या था? नाहिदा चेक करो। गांधी को 2 मंथ लगे थे फुल ग्राइंड में, अब इत्तो को लगाने पड़ेंगे 2 गाने। ब्रो जो तुमने यहाँ गांधी लिखा है ना, मैं 1 मिनट, ये कोलैबोरेशन कब हुआ? भाई टाइम तो लगता है इसमें कैरेक्टर डेवलप करने के लिए, मतलब 1 साल के बाद भी मेरे पास कैरेक्टर्स नहीं है। ये क्या है? री इंश्योरेंस टेस्ट रन इवेंट अवार्ड्स। देयर इज एन इशू वेयर बाय देयर इज एन एरर इन द रिवॉर्ड फॉर फारूजान्स ट्रायल। अच्छा भाई प्रीमो जेम्स दे देते, क्या पकड़ा दिए 3 अजीब से लाल फूल। डार्क ले गए सिल्वर ब्रो। ओके देखते हैं। नहीं तुम्हें तो शायद मैंने ऐड कर रखा होगा ना। फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे आई थी उस दिन 2-3, मैंने एक्सेप्ट कर ली थी। अरे एक्वेरियस इज ऑनलाइन, बट बाद में बात करेंगे। ब्लैंक टीम में नकीरा, गैब, एली, अभी, सलीम, प्रत्यंश, डेड शॉट, गुद्दे, दाममा। बाय द वे मैं मेसी की पोस्ट देखी, पबजी के साथ कोलैब कर रहा है। अरे भाई भाई पबजी और फ्री फायर तो अलग ही लेवल जा रहे हैं। गांजा सेंजा, ओ नहीं जियाना सेंजा, डोनट, ट्यूक, कैंडी। भाई इतने लोग हैं भी मेरी फ्रेंड लिस्ट में, मुझे आज पता लगा। वेट वेयर आर यू ब्रो? इसमें कोई सर्च का ऑप्शन है? यूआईडी टाइप कर लेते हैं। क्या थी यूआईडी? 8194 8194 8194 76 76 76 346 346 एंटर। ओह एंटर काम नहीं करेगा, भूल गया था मैं। भाई कितने अच्छे से नाम लिखा है ना। तभी तो स्किप हो गया। काम 25 है। नाइस ब्रो। नाहिदा का है तुम्हारी। अच्छा एलिमेंटल मास्टरी वाली बनाई है ना, हाँ तभी। डैमेज कितना देती है भाई ये? डेंड्रो डैमेज की जगह एलिमेंटल मास्टरी का कप दिया हुआ है। सैक्रिफिशियल फ्रैगमेंट्स, ओके। आर्क लियो हो गया। तभी तो नहीं दिखा मुझे। 3000 कुछ देती शायद। ओके भाई तो क्या चेक करूँ मैं इसमें? एलिमेंटल मास्टरी चेक हो सकती है इसमें तो, क्योंकि शायद डीपीएस बिल्ड नहीं है ना ये। एलिमेंटल मास्टरी का बिल्ड है तब तो उस हिसाब से बहुत सही बनाया तुमने। 40 अटैक एलिमेंटल मास्टरी। भाई मुझे एक ऐसा मिल जाए ना गॉबलेट, मेरे मज़े आ रहे हैं। नाहिदा के पीछे कौन सा है ये? एलिमेंटल मास्टरी का कप लगा ही था मुझे।
सही यार, अगर एलिमेंटल मास्टरी नाहिदा बनाई है तो सही है। EM बिल्ड है सिल्वर ब्रो भाई, तब तो सही है। 1K के आसपास तो पहुंचा दिया है भाई तुमने, टैलेंट देखें। तभी तो कम डैमेज दे रही है भाई। EM बिल्ड में डैमेज तगड़ा देती है। 10-10-10 करो भाई इसको। मैं तो तीनों को क्राउन करूंगा नाहिदा के टैलेंट को, एक बार मुझे वो फ्लावर्स मिल जाए ना बस। सही नाहिदा है भाई। चलो अब ज़रा आर्कॉन क्वेस्ट शुरू किया जाए। अरे गलती से मैंने बटन छोड़ दिया। गो टू सैंक्चुअरी ऑफ सुरस्थाना। सैंक्चुअरी ऑफ सुरस्थाना। बोलो जुबा केसरी। नहीं मत बोलना। स्टोरी टाइम। Come on, serious suggestions, please. I'm not trying to write a thriller here. It's supposed to be an essay, you understand? An essay. That means facts and logic. ये लो लड़ाई चालू रैंडम एनपीसी की। वो स्कारामुश वाला बॉस देता नहीं है, देता नहीं है सही मटेरियल। क्यों भाई? मटेरियल तो कोई भी मिले डेवलप तो हो ही जाता है कैरेक्टर। वो क्राफ्टिंग बेंच पे जाके मटेरियल चेंज हो जाते हैं ना। Well, if it's facts and logic you're after, you shot yourself in the foot with your choice of research topic, didn't you? That's Sawada. a Suna mystery. अबे When सिंघाड़ा so नाम रख much देते हैं remains unexplained, there's little to be objective about. Yeah. बट मुझे एनपीसीज की कॉन्वर्जेशन में कोई Yes, इंटरेस्ट you नहीं है। came to me. निकलो। नाहिदा का है। Did one of them just mention Tatarasuna? But that's all the way in Inazuma. सत्यानाश, कुछ तगड़ा मिस कर दिया मैंने। तातारा सुना तो वो है ना, तातारा सुना हाँ, इनाजुमा में एक जगह है। सिगाड़ा सिगाड़ा भाई, सिंगाड़ा या सिगार। Paimon, or is it kind of unusual for someone in Sumeru to want to write a paper about that? Everyone here is just going about their business. Maybe it really is just Paimon. Guess people here are free to research pretty much anything. कुछ भी रिसर्च कर लेते हैं भाई, एवल हो गए यहाँ पे बहुत। होयो वालों को बोलना पड़ेगा स्किप बटन ऐड करो। वर्ल्ड क्वेस्ट में तो आई एग्री यार, वर्ल्ड क्वेस्ट में मैं भी चाहता हूँ स्किप बटन हो। मत आर्कॉन क्वेस्ट में भाई मज़ा आता है डायलॉग सुनने में। हाँ अनलेस रैंडम एनपीसी ना हो, मतलब प्लेबल कैरेक्टर से कॉन्वर्जेशन से मज़ा आता है भाई। यू नो पर्सनैलिटी और निकल के आती है जिन कैरेक्टर से तुम खेलते हो उनसे, और फिर और मज़ा आता है भाई। अरे मैं इसमें ना रैफल खोल देता हूँ, ओपन रैफल गिव अवे वाला। ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू। नहीं ब्रो, ओपन रैफल खाली मैं ही डाल सकता हूँ कोड। Great! Let's go find out what this Tatarasuna mystery is all about. Slime. Hey Slime. You do not have permission to see. ओपन रैफल खाली मैं कर सकता हूँ, और इफ़ अगर मेरे चैनल पे मॉड्स होंगे इन फ्यूचर तो वो खोल सकते हैं। स्लाइम, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन। मतलब भाई सुमेरु में भी आके मैं तातारा सुना के लिए काम करूँगा। आर्कॉन क्वेस्ट, यस ब्रो, आज आर्कॉन क्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग। हेलो ब्रो, हे याशा, वेलकम टू द स्ट्रीम मैन। स्ट्रीम एलिमेंट बॉट, बड़ी जल्दी आ गया स्ट्रीम एलिमेंट। तो पहले आना होता है भाई, तो मुझे उनके पास जाना है ना भाई। ऐसी जगह सच में मिल जाए मज़ा आ जाए, अकेडमिया जैसी। हेलो हेलो, हे निधि, वेलकम टू द स्ट्रीम। I have a feeling that the missing Kabuki Mono will end up being the main focus of this paper. Ugh, if only we knew where to find that traveler. From what they say about him, this seems like the kind of thing he'd know about. किसी ने मुझे याद किया, मैं आ गया भाई। Oh,
you're the traveler, you say? अरे भाई थोड़ा अच्छा रिएक्शन दो. ऐसा मुंह बना रहा है जैसे जिसने करेले की सब्जी सामने रख दियो. Hey, what's with that face? Don't believe us? देखो भाई पीले बाल हैं, पीली आंखें हैं, कोई भी एलिमेंट यूज़ कर सकता हूँ और ये पता नहीं क्यों मैं पेट दिखा रहा हूँ पर मैं ही हूँ यो. No, no, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. See you later. Gotta go for dinner. Sure Asher, हम यही बैठे हैं. 700 can buy 2 बिरयानी. 700 में 2 बिरयानी भाई कहाँ मिल रही है? 2 किलो बिरयानी बोल रहे हो या फिर 2 पैकेट बिरयानी? डू रीड माई चैट्स. अरे आशर पढ़ ली भाई. और भी कुछ लिखा था क्या? वॉन्डरर की यादें चली जाती हैं और वो जिंदा है. यार प्लीज़ स्पॉइलर मत ड्रॉप करो, चैट में मज़ा नहीं आएगा फिर खेलने में. ये यू नो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस नहीं मिलता फिर. 2 पोर्शंस. नाइस भाई. पर बिरयानी कोई भी बट हैदराबादी बिरयानी इज़ द बेस्ट. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck. Mysterious silver-haired Out of force of habit, companion. I started examining the evidence. वो देखो भाई आशर की evil laugh. मुआहाहाहाहा. So what? For the love of... Aquaba. Sorry, we don't get out much, so our social skills are kind of lacking. दिख रहा है वो तुम्हारी सोशल स्किल तुम्हारी मुच्छों की तरह बर्बाद है भाई. भाई नाम इतना सही है एक्वाबा, किसी लड़की एनपीसी को रख देते हैं यहाँ पे. Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. Gamble 10,000. Ayato sim detected. Bro, you know something? Bro, no spoilers. पहले ही बता रहा हूँ मैं. I see. Sorry, I can't My help this teacher time. chose this area of research as a personal Ayato sim challenge. detected. He किसी ने said कुछ it's बोला है क्या difficult आयातो to के लिए get भाई? into because even Inazumans भाई कहाँ don't मिल know गया much आयातो about सिम? Tatarasuna's मुझे तो कोई past. आयातो नहीं दिख रहा But भाई. who'd have thought? If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. भाई तातारासुना से क्या Hold ऑब्सेशन on, है तुम्हारा? don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Nice. I completed Abyss for the first time. Let's go निधि. Let's go. First time करके मज़ा ही आ जाता है यार. You on your screen with boba tea. No, that's not Ayato simp. That is just. Let me give you some background. This all started Well, अब with तो मैं the खुद सोच में पड़ discovery गया of some भाई. records in Tatarasuna. The सिम्प वाली writings बात नहीं है, बस mention मेरा someone नाम by the सिल्वर है name तो of मैंने गेंशिन में एक Koshin कैरेक्टर ढूंढा Nagamasa, who जिसके granted बाल divine सिल्वर हो और वो blood. लड़का हो तो मुझे आया तो ही मिला तो मैंने लगा ली भाई डीपी उसकी. फिर मैंने उसे मेन भी But कर in लिया. the end, he threw it into यही a स्टोरी है fire पूरी. to destroy it and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. अरे यार ये एनपीसी की हटाओ ऐसी की तैसी. मुझे एनपीसी की कॉन्वर्सेशन नहीं सुननी. This part's important. It just so Bro, you know that happens a friend Signora of is mine dead. works अरे at the भाई government भाई भाई records भाई. office. He looked into it for me, and I can वापस now आएगी वो confirm बता रहा that हूँ. all ड्रैगन बॉल ला के African जिंदा करेंगे सब individuals उसको. did, in fact, live in Well, Inazuma if this over is simp, 400 then I years guess ago. you are slime simpsons. भाई ये क्या रिवर्स लॉजिक लगाया है? Yes, I am. Even back then, Tatarasuna was almost Slime the is center of Rimuru Inazuma's simp. smelting industry. The man in charge was a government आने में official तगड़ा है named पर Rimuru Niwa. वाला. Curiously enough, it seems like he went missing too. अरे कौन गायब हो गया भाई? Could it be? Wait, so there are 2 missing people in this story now? सीजन 3 आ रहा है उसका. कोई मूवी भी तो आने वाली थी ना. मूवी आ गई क्या उसकी? That's right. What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Oh, Skip, the skip, swordsmith? skip, skip, Yeah, skip. Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So basically, this Niwa was a distant हाँ आ relation रहा of है. Kaidahara So clan, Deadshot is a Naruto past simp. practitioners of Ishin art. भाई ये क्या सिम चल रहा है चार्ट में? अभी नहीं भाई. अगर मैं ट्विच पे स्ट्रीम कर रहा था ना मैं आज के आज बैन हो जाता. वहाँ पे पता है ये वर्ड बोलने पे ना तुरंत बैन मिलता है.
Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. अरे कायदेहारा काजुहा के बारे में कोई बात हो रही है, अब नहीं करेंगे Everything skip. else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. अरे नहीं नहीं भाई, कुछ कनेक्टेड नहीं है. The Kaidahara clan? काजुहा को बुलाओ भाई. Sawada, you left out the biggest detail of all. There's more. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, और ये this म्यूजिक is by far the most. भाई, इस म्यूजिक के साथ ना स्टोरी पे फोकस करना मुश्किल है मेरे लिए. स्लाइम, वाई. अरे डेड शॉट, हारते जा रहे हो भाई. मेरे को कोई वेस्ट इत्तो के लिए टीम बता दो. अच्छा सस्ती सस्ती टीम. भाई इत्तो के लिए बेस्ट टीम तो मुझे वही पता है कि मतलब इत्तो ले लो और अगर वो है तुम्हारे पास एल्बिडो रख लो, गोरू है गोरो रख लो और जोंगली. इफ़ अगर एल्बिडो नहीं है तो निंगवांग भी सही है उस टीम में. जियो डैमेज वो और देगी. Get to the point, for Pete's sake. और पता है गोरो तो हील भी देता है. अगर उसका C4 है तुम्हारे पास, गोरो हील भी देगा. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabuki Mono was not a human, but a puppet. उत्तरी काबुकी मोनो. अच्छा ये उस इवेंट का रेफरेंस है शायद, वो जो 5 पोएट्स का आया था इनाजुमा में. Puppet? The Shogun puppet that the Electro Archon made should be ruling Inazuma with her as we speak. It couldn't be her. तुझे भी पता है भाई, स्कारामुश की बात हो रही है. The Kabo kimono has to be valid here, but what was he doing 400 years ago in Tatarasuna? Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. Albedo नहीं है ना जोंगली ना निंगवांग. भाई जोंगली नहीं है अभी तक. आउच. इत्तो गोरू निंगवांग. भाई भाई. और वेपन प्रोटोटाइप रखूं या दूसरा डिफेंस वाला? डिफेंस वाला दे दो भाई, डिफेंस पे तो स्केल होता है ना वो. आई गेस इनाजुमा में भी एक क्लेमोर है, वो शायद एनर्जी रिचार्ज देता है शायद ना. इनाजुमा में एक है क्लेमोर अलग से. भाई अगर नहीं है ये जियो कैरेक्टर्स तब तो भाई मतलब वही रैंडम बफ टीम ले लो. मोना को रख लो, डैमेज बूस्ट मिलेगा. बेनेट को रख लो क्योंकि ये जियो एलिमेंट तो वैसे भी रिएक्ट करेगा नहीं तुम्हें अटैक. वेट पर ये तो डिफेंस पे स्केल होता है. मोना तो काम आ जाएगी भाई. उसके साथ तो फिर मोना ले लो. हीलिंग के लिए कोकोमिया बैनेट ले लो क्योंकि अटैक बूस्ट तो बैनेट का मिलने से रहा डिफेंस वाले कैरेक्टर के लिए. एंड काजुहा ले लो, सबको पकड़ के लो, मारते रहो. बट इफ आई वर यू ब्रो, मैं ना थोड़े से कैरेक्टर्स निकालता जियो के जैसे चांस मिले, क्योंकि जियो टीम के साथ अलग ही लेवल है इत्तो का. How creepy! The way you described it makes it sound like a ghost story. The team I used for floor 12 first team is Itto Goru Kasu Chichi. गोरू कासू चीची. ये टीम भी सही है भाई. इस टीम से बंदे ने फ्लोर 12 निकाल दिए तो ये भी अच्छा है. इत्तो बैनेट गोरू शांगलिंग. ब्रो तुम्हारे पास ना गान्यू है तो शांगलिंग को इस टीम में वेस्ट मत करो. गान्यू के साथ रखो उसको. मेल डैमेज इतना तगड़ा देती है गान्यू. मुझे अभी टीम डिसाइड नहीं किया. इत्तो के लिए यार बेस्ट टीम तो वही है जो पहले बोली मैंने, मतलब चारों डिफेंस वाले. निंगवान नहीं है तो युनजिन रख लो. युनजिन नॉर्मल अटैक स्पीड बढ़ा देती है. आई गेस C4 या ऐसे ही C6 में शायद, C6 में शायद वो. ब्रो रीड माई चार्ट ऑल्सो. ब्रो कुछ मिस कर दिया क्या मैंने? डिड आई मिस समथिंग? काजुआ नॉट काजुहा, इट्स काजुआ. ब्रो कुछ मिस कर दिया क्या मैंने चैट? नो आई डोंट थिंक सो. कुछ मिस हुआ है. He cleared abyss for me. Come on man. You said waste it तो? नहीं सस्ता it तो. नहीं he said सस्ता it तो. वो वस्ता लिख गया कुछ. Slime is like
आई लव वित्तो बट लॉजिकली थिंकिंग यू शुड हैव पुल्ड ए. उस पे पहले से ए है. I have Raiden. Yep. I agree. It does. Can't wait 15 But days more. Considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected, and that's exactly what my book is about. Please take a Spooky look. event. मतलब यहाँ पे ना 2 इवेंट का रेफरेंस मिल रहा है. एक तो वो कानी कुजुशी वाला और दूसरा ये जो अभी एक आने वाला है, टेस्ट ऑफ करेज वाला. आई एम सेइंग डेड शॉट. ओके. Author Singhada Extract 1 blah 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 blah. ओ भाई ये लोग सही में एक्सपेक्ट करते हैं इतना कोई पढ़ने वाला है? Oh, and please read my essay draft as well. Okay, bro, I am waiting for like 40 days. Bro, I am waiting since like जब आखिरी बैनर के बाद से मैं वेट करूँ कब आए शोगन का. मुझे वेपन निकालना है. अरे भाई कौन पढ़ेगा इतना? थोड़ा तो रहम करो अपने प्लेयर्स पे. Sawada was encouraging me to follow his more creative approach, but I think essays More should be 15 days to grounded go. in facts. Sign I off. don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. I was waiting after Sino for Raiden, but still she didn't came and I can't stop myself. I feel you bro. How about जब एक साथ ही अच्छे plug the कैरेक्टर आ holes जाए in ना. Sawada's मेरे साथ ये हुआ था जब narrative गान्यू का a रीना little आया था. intrigue. गान्यू, Like, शोंगली, I could put a कोकोमी, turf war between rival सब factions at characters the सही center थे. of the whole series of events. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Akabal. यार Besides, स्किप करो यार. कहाँ है अच्छे कैरेक्टर्स? Okay, back to the drawing board. प्लेबल कैरेक्टर्स को लाओ Much यार. stuff to do. All right, thank you. 15 मिनट इसी में वेस्ट हो गए मेरे. चलो अब नाहिदा और स्कारामुश के पास चलते हैं. यूला और येलान कमिंग बैनर. यार येलान और शेनहे को एक साथ आना चाहिए. That thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Yes. Okay, then even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? Have more pulled at shot. 10 pulls. 6 बात. यूला येलान not for the moment. येलान तो आएगी भाई. येलान का मैंने वहाँ देखा है. आई गेस 3.4 या 5 में येलान शेनहे भी आने वाले हैं. और इफ आई ग्राइंड कैन डू 50 आई गेस 160 फ्रैग्स रेडी. क्या बात है भाई. कीप ग्राइंडिंग फॉर मोर पुल्स. भाई राइडन के बैनर तक कुछ पुल मत करना. Got 'em locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? मैंने इवेंट किया मुझे पता है. Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics अच्छा, as there are Akaba. trees in the forest. There's no point in... कोई तो आया. स्कारामुश. चलो लड़ाई करें. Hey, did you see that? He literally just went by over there. It looked like the balladeer. No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. But I am a 50-50 and I know my luck. I can wait if they come in 4.0. I'll give 10% of my artifact luck to you. Just 10%. ऊपर ही चलना है ना मुझे. डेड शॉट ब्रो ट्राई करके तो देखना पड़ेगा ना. मतलब कलेक्ट द विशेस. विश करके देख लो. 50-50 हार गए तो और सही भाई. नेक्स्ट कैरेक्टर कंफर्म है. और भी अच्छे कैरेक्टर्स आ रहे हैं अभी. लाइक अलहातम आ रहा है यार नेक्स्ट वर्जन. ओए एक मिनट. ड्रिप मार्केटिंग नहीं आई है इस बार किसी भी कैरेक्टर की ना. ड्रिप मार्केटिंग नहीं आई है इस बार. मतलब कुछ तगड़ा. अच्छा हाँ. ड्रिप मार्केटिंग क्यों नहीं आई है? मेरे पास एक थ्योरी. मैंने रिसेंटली कहीं न्यूज़ देखी थी कि ये गेंशिन वाले ना किसी बड़े लीकर के पीछे लगे हैं. इसलिए शायद इन्होंने इस बार बीटा टेस्ट खोले नहीं है. नई ड्रिप मार्केटिंग की कि फिर से कुछ लीक हो जाएगा. मतलब कुछ तगड़ा होने वाला है भाई अलहातम के साथ या डेया के साथ. भाई यहाँ का म्यूज़िक मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ भाई. Traveler, Paimon, there you are. मतलब वॉल्यूम बस मेरे कान में बढ़ेगी. ना 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 ना. Nahida, bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. I will give you HoYoLab creators luck. Okay. And that shot I will give you gambling luck.
जो कि मेरी स्ट्रीम से बहुत मिल गया है भाई तुम्हें. Did he escape or? Ah, it's him! हाँ डरो डरो. Sure enough, you're here. Hey, what are you doing in the sanctuary of Surastana? Aren't you supposed to be locked up? यार इसकी ये स्किन इन लोगों को निकाल देनी चाहिए. ये काफ़ी बैडास लुक है. I have a lot of questions. Please, allow me to explain. करो भाई. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. ओके अब हम अर्बन सोल जाएंगे. मतलब वो नीला सा पेड़ जो टीजर में था. ब्रो रीड माई चार्ट ब्रो. कुछ मिस हो गया क्या? दैट 10% इज मोर देन सिल्वर्स 100%. आउच. इससे अच्छा तो मिस ही कर देता. मैंने क्यों पढ़ा? A deal? Huh. You sure you trust this guy? सही बात है. What did you expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. ये बताना नहीं था यार. डार्क वेब में जाए गए. क्या हो गया भाई डार्क वेब में? ना ना ना. आज के कमीशन कर लिए. यस ब्रो कमीशंस करके स्टार्ट किए. So if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. भाई टू बी ऑनेस्ट सही में मेरे पैर ठंडे पड़ रहे हैं भाई. बहुत ठंडी है. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? ओके बच्ची बोल रही है तो मान लेते हैं. You, Nahida? Don't let him trick you. यो हे जय वेलकम टू द स्ट्रीम मैन. और क्या हालचाल? कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम? It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. भाई स्कारामोश लिटरली अलग लेवल पे इसका डिज़ाइन. ये मतलब शक्ल से ही लगता है विलन है. डेड शॉट यू विल गेट राइड एंड आई गारंटी यू. सेड बाय निधि. डेड शॉट ओके. यो अर्मन सोल इज लाइक डार्क वेब. भाई क्या कंपैरिजन निकाला है स्लाइम. वेल डन. हाय ब्रो क्या हालचाल? सही है भाई. सिल्वर एग्जाम भी लाइक अभी तो मैं स्टार्ट की. Don't you dare try to drive a wedge between us. सही बात है. As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal, even with the balladeer. भाई काफ़ी सौदेबाजी करती है लड़की. Well, I for one have no reason to doubt you, considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. अरे वो स्काई का बताओ ना भाई. स्काई इज फेक वाला. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Okay, so now I have to do commissions and Abyss. Still on 8th floor. Okay. Silver भी like अभी तो okay ये तो मैंने पढ़ लिया. Tomorrow is my last exam. After that I try to get more Mora. That's the dedication bro that we need. When is giveaway? Giveaway मैंने raffle तो open कर दिए थे भाई कल से ही. Nice. Q&A में आंसर दोगे पक्का? हाँ स्ट्रीम के लास्ट में मैं देखूंगा क्योंकि He's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. सही बात है भाई. दिमाग तो बड़ा है इसमें. हाँ रिगार्डिंग Q&A मैंने बस वो ट्राई करने के लिए आज ओपन किया था बट ना मैं ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ. मतलब ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं. मैंने चैट खोली हुई है सेकंड स्क्रीन पे बट उसमें ना मुझे क्वेश्चन अभी नहीं दिख रहे. मुझे उसके लिए ना गूगल क्रोम पे खोलना पड़ेगा. तो यार जैसे ही मैं स्ट्रीम खत्म करूँगा ना स्ट्रीम के एंड में मैं एक बार ओपन करके भाई सभी क्वेश्चंस के आंसर करूँगा. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? हारबिंजर नहीं है अब ये. I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so...
सो ही टॉस्ड यू आउट लाइक ट्रैश। ओ भाई ये सही में बोलने वाला है ये। जय गोहिल यू हैव 900 मोरा, गिव नीनी 5000 मोरा। अपनी गेंशिन अकाउंट का ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दे दो। आई लाइक दैट कॉन्फिडेंस ब्रो। Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Dead shot. Certainly Ooh. all the stable ones are. Everyone in the chat That's drop their how it UID is with between me and the password. Fatui, and also between each of the सही में मत करना harbingers. भाई, या करना है तो So कर as लो long भाई, as मैं you किसी को have रोक some नहीं सकता value यहाँ to पे। offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. भाई तो दिल पे ले गया, मैं भूल गया था ये बंदा डिप्रेस है भाई। डिप्रेस लोगों को कुछ भी बोलो दिल पे ले जाते हैं वो। रियली व्हाट अ क्राइंग शेम भाई, ये क्यों इसकी जलाने में लगा हुआ, क्यों खिलसा रहा है भाई ट्रैवलर। Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? अभी ये छुटकी बच्ची हमें बचाएगी, मतलब इसको बचाएगी। हाउ मैनी अकाउंट्स यू प्लेइंग? डेड शॉट ले ले, डेड शॉट मेरा। सिल्वर आईडी नॉट वर्थ इट। सही बात है यार, कुछ डेवलप ही नहीं है ना आर्टिफैक्ट से मेरे पास, क्या करोगे मेरी आईडी लेके। डेड शॉट आईडी, ओके जस्ट किडिंग, इट्स नॉट, बट आई एम सीरियस ब्रो, इट्स नॉट वर्थ बट आई विल मेक इट वर्थ। अरे भाई साहब, ओह दैट्स अ गुड पॉइंट, नाइस। स्लाइम ने मुझसे पूछा है हाउ मेनी अकाउंट्स यू प्लेइंग। बस 2 अकाउंट है भाई, एक तो ये मेन अकाउंट है, दूसरा अकाउंट मैंने ऐसे फ्लो में बना लिया है, उसमें मैंने लियो तक आर्कॉन क्वेस्ट कर रखा है। उसमें जब भी ये प्रीमोजेम्स आते हैं ना मेल में, बस उसमें क्लेम करता हूँ और विश करता हूँ, फिर वापस बाहर आ जाता हूँ। उस आईडी में मेरे पास है कचिंग, यूला, नीलो, बस। I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your टेक माई friends. अकाउंट। So I guess you'll be दो siding with अकाउंट them. हैं, ऑफ लक दोनों में नहीं है भाई। मेरा ये जो है अकाउंट, इसमें तो काफ़ी सही लक है, मतलब जो भी कैरेक्टर चाहिए आर्टिफैक्ट नहीं मिल रहे, कैरेक्टर मिल जाते हैं मुझे इस आईडी में। दूसरी आईडी बड़ी अनलकी है। Nahira, don't listen हेड शॉट, to him. इमोशनल डैमेज। अरे भाई इमोशनल डैमेज वाला वो चलाओ कोई। Let's put that discussion to the side for now. We still have time. बहुत टाइम है भाई। Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. ओके All right, then I'll do what we agreed. ओके। डेड शॉट ब्रो, यू आर सपोर्टिंग अर्जेंटीना राइट? यस। अगेन भाई इमोशनल डैमेज में अगर स्पेस आएगा तो कोड वर्क नहीं करेगा। इमोशनल डैमेज विदाउट स्पेस, तभी वो काम करेगा। Good. Go now and keep in touch. बाय द में क्या बोलूँ मैं, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में सारे कोड्स हैं, अगर किसी को देखना है बॉट्स के, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे ऐड कर दिए हैं। Nahira, are you serious about this? यस, कॉपी कैट। I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Emotional damage. इसी का वेट कर रहा था मैं। Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. 1000 मोरा कर दो रिडीम करने के लिए। ओके, अगर सब लोग अग्री करेंगे तो मैं कर दूंगा भाई 1000 साउंड इफेक्ट्स के लिए। मैंने सोचा 500 है तो Oh yeah. सब लोग कर Actually, पाएंगे। that's the whole reason we came to see you today. So you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. This is an extremely important point. पॉइंट टू बी नोटेड भाई, ये बहुत ही मेजर मतलब स्टोरी डिटेल है गेम की। It's possible चौथा that the Descender Fatui कौन है? have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. सो लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। हमारे पास अभी तक 3 डिसेंडर्स हैं। एक तो ट्रैवलर खुद,
दूसरा कौन था? हाँ, दूसरा वो जो गेम के स्टार्टिंग में बॉस आती है, हेवनली प्रिंसिपल्स. तीसरे डिसेंडर्स हुए हैं जो हेवनली प्रिंसिपल से लड़ रहे थे, मतलब जो सेलेस्टिया से लड़ रहे थे. फोर्थ डिसेंडर इज स्टिल अननोन और वो ल्यूमीन नहीं है बिकॉज ल्यूमीन इसी वर्ल्ड की है समहाउ. सो या दैट्स द स्टोरी. अगर किसी को यहाँ तक नहीं पता है तो क्या चल रहा है भाई? अर्जेंटीना इजंट लूजिंग. ऑफ कोर्स दे लूजिंग अगेंस्ट ब्राज़ील. अननोन गॉड. यस, अननोन गॉड. प्रिंसिपल ऑफ हेवन नहीं, क्या था? गार्ड ऑफ हेवनली प्रिंसिपल, कुछ ऐसे उसने अपना टाइटल रखा हुआ है. अंटिल वी मीट विद ब्राज़ील. ओके ओके ओके. He was granted the power Soccer to talks. connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. क्या बात है भाई. The amount of information in Irminsul Cameron. is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. अरे गूगल बनाओ अर्मनसोल के लिए, मैं बताता हूँ. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information and should be able to find it more quickly. मुझे लगा अर्मनसोल से तो ये कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकती है. अर्मनसोल तो यही है भाई. फोर्थ इज कैमरामैन. नाइस स्लाइम, नाइस. ब्रो सेट सॉकर ब्रो. सॉरी ब्रो, सॉरी ब्रो. वर्ल्ड कप. Paimon just doesn't trust him. He's treated us as enemies every time we've run into him. I understand. But sometimes everything is dictated by which side you're on. सही बात है भाई. दैट इज लाइफ इन अ नटशेल. कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन. Information he brings back. And traveler, I know what your heart desires most of all. यस, भूख लगी है मुझे, खाना चाहिए मुझे. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. सीधे सीधे बोल देती भाई लुमीन को मिस कर रहे हैं. इट्स नॉट वर्ल्ड कप आइदर, इट्स फुटबॉल. ओके ब्रो, फुटबॉल. रोल 44 लॉस्ट. ओके जय लॉस्ट. भैया तो सभी हार रहे हैं. गैम्बल क्या बात है. 900 मोरा. जय शिट रिडीम. राडीम. अच्छा तभी तो नहीं हुआ भाई. ए लिख दिया, वो ई आएगा वहाँ पे. स्पेलिंग मिस्टेक. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who Bro, counts Nini you as a forgot the friend, goal against I Mexico. want to do something for you. भाई मैं इस बार फॉलो ही नहीं कर रहा हूँ गेम इस बार का. मैं देख ही नहीं पा रहा. दिन में काम, रात को गेंशिन. If this deal with the Balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. मुझे लगता है बस हाइलाइट्स देखने वाला हूँ भाई जब ओवर हो जाएगा पूरा. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. भाई मैं 2 मिनट के लिए सोच रहा हूँ नायदा की शक्ल है एहते नांदायो. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? बाय द वे अगर किसी के पास कोई सजेशन है ना, हम और कौन कौन से वॉइस पैक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यू कैन लेट मी नो इन द चैट. मैं ना साथ में लिख लेता हूँ भाई ऐसी चीज़ों को, जिससे और एंगेजिंग बन सके हमारी चैट. या इफ़ यू वांट अगेन डिस्कॉर्ड सर्वर में देयर इज़ अ लास्ट टेक चैनल बाय द नेम ऑफ फीडबैक, वहाँ पे भी ड्रॉप कर सकते हो. I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. ये बात वो बंदी बोल रही है जो घुस जाती है बिना मतलब वो कंसेंट के दिमाग में. In Still fact, won though. I was going to ask you to supervise the Balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. मिस इज़ अ मिस दो. क्या मिस हो गया भाई? Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former Harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside.
Got it. I'm glad to be able to help. अब तो आदत हो गई है भाई. Great. Thank you. बट एटलीस्ट इसने हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है सही सी. बाकी तीनों ने आर्कॉन ने तो भाई फ्री में काम करा लिया मुफ्त में. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. ओ चलो भाई, चलो 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 अर्बन सोल जाएंगे. Silver bro, we have school, genshin stream, studies and football. I don't know where we get. It looks pretty different here compared to last Damn it. time. The colors are Nice. gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. मुझे 2 मिनट के लगा कि अर्बन सोल में गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ कहाँ से आ रही हो, मेरे पीछे से आ रही थी. भाई कितना सही लग रहा है अर्बन सोल. कहाँ पे आई? अच्छा, मैप का बटन काम नहीं कर रहा. अरे मैं माउस को भी अलग से यूज़ नहीं कर पा रहा. कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा भाई, ना एलिमेंटल स्किल, ना नॉर्मल अटैक, ना स्प्रिंट कर रहा है बंदा. मैं बस आगे पीछे चल सकता हूँ और ऐसे देख सकता हूँ. नॉर्मल मिसेज इज़ डिफरेंट फ्रॉम पेनल्टी. अच्छा, फोटो तो बनती है भाई ना. नॉर्मल मिसेज आर नॉट डिफरेंट. बट भाई मेरे गेम में ना एक ग्लिच तगड़ा है, सेव नहीं होती है फ़ोटो. मुझे स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है फ़ोटो की. नाइस जोक्स लाइन में. फ़ोटो भी कहाँ से लूँ? स्क्रीनशॉट ही ले सकता हूँ मैं. क्या मैं उड़ सकता हूँ? मैं जंप भी नहीं कर सकता. स्कारामोश, स्कारा की Look at मूछ. that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Nahida sent me to babysit you. भाई इन दोनों की लड़ाई मस्त चलती है भाई. ना नॉर्मल मिसेज आर नॉट डिफरेंट. भाई साहब ऐसा लग रहा है दो. भाई फुटबॉल में क्या कहते हैं? अंपायर ही कहते हैं ना उनको, वो जो फाउल का टिकट देते हैं. सॉरी गाइस, मुझे ना बहुत ही कम नॉलेज है फुटबॉल की. मतलब ऐसा लग रहा है भाई नीनी और डेडशॉट आर 2 अंपायर्स. दोनों ना एक एक को कार्ड निकाल के खड़े हैं. तू आउट है, तू आउट है. नहीं वो मीम देखा है जो कहते हैं बहुत जगह है, नहीं जगह है. एक तरफ नीनी है इधर, एक तरफ डेडशॉट है. मिस है, सेम नहीं है. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! भाई काफ़ी रूड है भाई ये दोनों. भाई आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट, बस भाई ये देखो चाइनीज पाइमॉन. I understand that prisoners have to put up with harassment from Oh, the wait. guards. But right now, पाइमॉन एक्चुअली I'm on चाइनीज है. temporary release. So maybe you should think about backing off a little. धमकी. इतने अच्छे म्यूजिक में धमकी नहीं लिया जा रहा. बेबी सेट यू. हाहा. सिल्वर ब्रो, आई सेंट यू अ क्वेश्चन. मैं Sounds देखूंगा like a ब्रो अभी. successful rendezvous. डेडशॉट बी लाइक हमारे यहाँ ऐसा ही होता है. यस. I need to be quite clear about something. ओके ओके एज यू से. In a few moments, Nidheep knows you'll be how to entering adjust. into the innermost region of Irminsul. It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. सही बात है. मिस इज अ मिस एंड मास्टर इज अ मास्टर. मिस्टर इज अ मिस्टर. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. एक्सक्यूज मी, टॉरेंट भाई तो जेल कराएगी. टॉरेंट से डाउनलोड करना बैन है भाई. मतलब टॉरेंट यूज़ करना इलीगल नहीं है, पर उससे कुछ डाउनलोड करना पायरेटेड मटेरियल इलीगल. I know there are many grievances between you on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. ओके. सुनने में लग रहा होगा कि काफ़ी मतलब क्या ही होगा, कर लेते हैं डाउनलोड. बट मैंने अपने कॉन्टैक्ट में देखा है भाई कई लोगों को जो टॉरेंट से मूवी निकालते थे, वो भाई पूरे पूरे हफ्ते बिता के आए जेल में. तो या करो तो चुपचाप करो भाई, बताना मत किसी को. मैंने कुछ नहीं बोला. बाकी Fine, let's call it truce, but only until this mission's over. ओके. You say that at just now. You started talking about World Cup then.
Okay, never mind. We will now know the answer after the semi-final. सही Let's बात cut है each भाई. other a little slack, shall we? We are gonna be traveling together after all. बट ट्रैवल करने के लिए क्या है यहाँ पे? बस एक पेड़ है बड़ा सा Per my सामने. agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. ये तो फ्लर्ट करने लग गया भाई. डेड शॉट. ओके. अरे डेड शॉट, यू चेंज योर डीपी. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. नाउ यू कैंट यूज VPN ऑल्सो ऑन PC. किस बात के लिए भाई? VPN तो मैंने अभी पीछे ही यूज़ किया था. डेड शॉट प्रोफाइल चेंज. यप, देख सबने नोटिस किया है भाई. बड़े तेज हो रहे हो बेटा. If there are no further objections, I suggest we get going. चलो भाई. Is that messy? भाई मुझे बहुत ही छोटी इमेज दिख रही Or है. did you need some time to mentally prepare yourselves? अरे चलो. Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. There's no need for all the biting sarcasm. Focus on doing your job. यार ये लड़ाई देख के बड़ा मजा आ रहा है. We can start now. Irminsul access granted. Initiating connection procedure. Is this a small sapling? Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Yes. I was using McCafe antivirus. Now there's no option for VPN. ब्रो भाई एंटीवायरस मत यूज़ करो. एंटीवायरस बहुत स्लो कर देता है भाई PC. विंडो डिफेंडर इज़ केपेबल इनफ. अनलेस तुम लोग कुछ फिशी काम ना कर रहे हो अपने सिस्टम पे, जैसे क्रैक्ड सॉफ्टवेयर डाल रहे हो, तब तो पक्का भाई वायरस आएगा. बट यार एंटीवायरस बहुत स्लो कर देता है यार. मतलब मुझे यार 4 साल हो गए एंटीवायरस यूज़ किए हुए. मैं क्विक हील यूज़ करता था. विंडोज़ 10 से फिर डिफेंडर सही काम करने लग गया. मैं कोई क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं डालता. डाउनलोड के टाइम में भी बी केयरफुल. इट्स टू स्मॉल. आई सिंपली टुक अ गेस. व्हाट? ओह अच्छा, DP. टुक इट फ्रॉम माई इंस्टा DP. नाइस. वन ऑफ माई फ्रेंड. इट्स अ वेरी बिग मेसी फैन. ही गॉट मोर देन 100 प्रोफाइल पिक्स. नहीं, ओनली फॉर यूट्यूब वॉचिंग एंड एडिटिंग. ओके, नाइस. So this is the inside of Irminsul. हम पेड़ के अंदर आ गए. Ooh, Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. मैंने देखी है. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. मतलब ये गूगल का सर्वर है. या विंडो डिफेंडर इज बेस्ट. ट्रू. ओके नीनी, व्हाई यू थिंक अबाउट तुम लगे रहो भाई. Pick your jaws up off the floor. It's time to go. पिक योर जॉब्स. भाई बस कितनी बेइज्जती करेगा. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. Can you still sense where the heart of Irminsul is? Yes. Permission to begin searching for information there? Permission granted. Go ahead. Let's go. Stay close. Don't go running off. भाई हमसे भी अच्छे से बात कर ले. Hey, so say we did go running off in here. What would happen? वो तो भाई करके ही पता लगेगा. सिल्वर ब्रो, इन दोनों के लिए एक फुटबॉल का सेक्शन बनाओ डिस्कॉर्ड पे. कोई तो अब गायब होके रीइनकार्नेट होने वाला है. ऐशर भाई प्लीज़, नो स्पॉयलर्स. ऑफ कोर्स फुटबॉल सेक्शन. I'd say France cause everyone are the young players in form. क्या चल रहा है भाई? But England, it depends on the match. सही बात है. What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost.
Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. भाई मैं सही में बता रहा हूँ, मैं फ़ोन पे खेलता था, अभी मैं बहुत ही मतलब बड़े मॉनिटर पे खेल रहा हूँ. डिफरेंस इतना क्लियर है ना ग्राफिक्स में. काफ़ी तगड़े ग्राफिक है भाई इस सीन के, इस जगह के. द गोट हेनरी मैगवायर. हाँ वो मुझे भी एक मैगवायर पता है, वो स्पाइडरमैन वाला टोबी. Don't mind the football messages you guys carry on. The fragments have dispatches. अरे पढ़ने तो दो Those are all भाई. packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. अच्छा रुक गया वो. अरे पीछे मुड़े ना, बाकी कैरेक्टर्स पीछे मुड़ के देखते हैं, ये नहीं देखेगा. ठीक है ना ये. मैं अभी भी फ़ोन पे ही खेल रहा हूँ. मैंने रिसेंटली पीसी पे शिफ्ट किया है खेलना. इसके पहले मैंने कभी नहीं भाई पीसी में गेमिंग की. कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग. It looks the same in every direction. RTX 4090 भाई साहब क्या चल रही है भाई. किसने लिया 4090? Yeah, this World Cup is full of. Okay. Continue exploring. No अरे क्या wonder निकल he आया? mentioned about getting lost. Huh. What do you know? He was actually telling the truth. अरे वो ऊपर क्या है? Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, Oh. but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? भाई बड़ा ही एपिक बनाया है ये. ऐसा लग रहा है शूटिंग स्टार्स उल्टा आसमान में जा रहे हैं. They just lost cause. They say it's okay. राफेल 490 का ग्राफिक कार्ड देखो We're here. भाई, बहुत ही तगड़ा है वो. बट आई गेस कैजुअल गेमर्स के लिए काम का नहीं है. मतलब अगर तुम डेवलपमेंट में हो तो ज़्यादा यूटिलाइज होगा वो, नहीं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा अगर कैजुअली गेम करते हो तो, मेरी तरह. ब्रो स्टेटस ऑफ 7 मैक्स कर दिया. क्या बात है भाई. ये रैफल काम नहीं कर रहा है क्या? काफ़ी मैंने रैफल के मैसेज देख लिए, रिप्लाई नहीं कर रहा है. बट ओपन रैफल कमांड तो यही है. ओपन रैफल. अरे आपको पूछ रहा हूँ, आपने कर दिया? नहीं ब्रो, मेरा स्टैचू ऑफ 7 खाली मॉन्स्टार्ड और लियोए का लेवल 10 पे है. इनाजुमा का 9 पे है शायद. बाकी सुमेरो का नहीं किया भाई. वो ढूंढने में ना बड़ी आफत लगती है मुझे. मतलब कोविड के टाइम पे तो बहुत टाइम होता था भाई, ढूंढ लो. Lesser Lord Kusanagi. इसमें एक करूँगा भाई कोई स्ट्रीम. Good, बोलो you वत्स. made it. Are you ready? द बॉट इज मिसिंग. ये देख, लगता है मुझे पीछे से देखना पड़ेगा थोड़ा सा. भाई 8 बॉल से किसने सवाल पूछा? मेरा इनाजुमा तक मैक्स लेवल पे है. क्या बात. 8 बॉल रैफल खोल और अगर कुछ उल्टा बोला डेड शॉट. द 8 बॉल सेज फॉरगेट अबाउट इट. छोड़ना यार, मुझे नहीं पता. ये सिल्वर को बोल बताएगा खुद. मुझे पैसे नहीं मिलते यहाँ तुम लोग के जवाब देने के लिए. मोरा. हर एक नेशन में एक एक्स्ट्रा मिलता है, पता है? हाँ भाई, एक एक्स्ट्रा ओक्यूली मिलेगी सबको. एंड अकॉर्डिंग टू थियरी फाउंटेन में एक ना कोई जगह है लेफ्ट नाम से, जहाँ पे 7 नेशंस की ओक्यूली डालनी है, फिर एक लेफ्ट ऊपर ले जाएगी हमें सेलेस्टिया तक. आशर यू हैव 4.6k. लेट्स गो. ऑल 4 लेवल 10. क्या बात है भाई. सेंड रैफल नंबर ऑफ टिकट यू वांट. रैफल 5. मेरे पास ड्रैगन स्पाइन की 3 एक्स्ट्रा है. जब मैं क्वेश्चन देखूंगा ना उसी टाइम में रैफल एक बार बैक एंड से देखता हूँ. ओपन तो कर रखा है भाई.
Then please begin. Preparing to access cognitive currents. या देखते हैं एक बार अगर कुछ Establishing way. The Balladeer's actually doing इंटरमिशन what टाइप में हो Nahida जाए यहाँ tells पे तो मैं देखता हूँ अभी him. Guess बैकएंड you से must want to खोलते हैं stay उसे. alive. He hasn't put up any resistance and he seemed good at working on the front line. Maybe he had a similar role in the Fatui. First Akaba, then Swada story, now this. What a strange individual. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Oh, imagine 4 Descender हम लोग हैं जो खेल रहे हैं. How much Mora needs for raffle? Bro, 1000 में एक raffle आएगा. Maximum 5 ले सकते हो. Gamble all. Jai Gohil 10,000 for one. भाई नहीं. 1k for one raffle. Maximum 5 are allowed. जितने raffle उतने chances जीतने के. For once, we're the ones with nothing to do. बेरोजगार हो तुम दोनों. Traveler, Paimon, would you like to talk? Nahida, is that a telepathic conversation? अरे बोल ले भाई तू भी. Yes, I've also invited Paimon to join. ग्रुप चैट जिसमें स्कारामूश को नहीं लिया. गलत बात है. What the? We can talk to each other inside our heads? I'm guessing that you don't want us to disturb Ballad here. That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Once in a while. कब से चल रही है ऐसी बातें सब पता है भाई हम सबको यहाँ पे. Raffle. Everyone's winning makes me wanna gamble. Do it. Just do it. Paimon's never tried this before. This is great. स्कारामूश को मालूम है ये लोग बात कर रहे हैं. भाई प्लीज नो स्पॉयलर्स. Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladeer's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. Yes, and he seems to excel at doing odd jobs for others. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Okay. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Is it about his past, the betrayals, and the other events in Inazuma? Well done. Smart and attentive as always. Actually, I caught a glimpse of a few things when I ran into Hypatia at Paradise the Eye. So, you made contact with that part of his mind. Nini won 2,000 Mora and now has 3,000 Mora. क्या बात है भाई? Betrayal turned the Balladeer into Giving the spoilers. person he Good is job, today. Nini. That shot. Nice. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Electro Archon. Speaking of puppets, we ran into 2 people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarazuna incident. Nahida, do you know anything about that? Skara search engine busy. If you mean the mysterious events, the Kabuki Mono and so on, yes. I know about all of that. Bro, raffle not working. एक मिनट. Streamlabs में देख लेता हूँ. Streamlabs तो फ़ोन में ही खुल जाएगा यार. क्वेश्चन के आंसर्स के लिए मुझे पीसी में खोलना पड़ेगा. एक मिनट में यहाँ पे देखता हूँ Streamlabs खोल के. कहीं तो खोल रखा था मैंने. फ़ोन में भी बैटरी 6% इसे चार्ज में लगाना पड़ेगा. What's that I forgot in which many people can go in adventures and on Mora? Heist. वो हीस्ट फीचर था. ओके तो यहाँ पे मैं आया चैट बॉट में. यहाँ पे गिव अवे कहाँ गया? गिव अवेज भाई पढ़ा तो ऑन है ये. एक बार ऑफ करके ऑन करते हैं दोबारा.
ओके अब चालू हुआ, मतलब ये कमांड से चालू नहीं होगा चैट में, ये तो बड़ी गलत बात है भाई। ऑलराइट गाइस, नाउ राफेल इज ओपन, हो जाओ शुरू। एट विच AR डिड एवरीवन क्लियर द अबिस फर्स्ट टाइम? ब्रो आई गेस मैंने फर्स्ट टाइम किया था AR-57 पे, उसके पहले 11 तक तो हो जाता था, 12th मैंने AR-57 पे किया है क्लियर। Asher, you receive 1 ticket, Raffle 5, Heast 100. I never clear it. You receive 5 tickets. भाई साहब, ये हीस्ट वाला इसलिए ना मैंने डाला नहीं था, हीस्ट वाला बहुत चैट स्पेस ले जाता है। Really? Because from what Okay, they back were to story. saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. You tell Nahida about the story of Akaba. Oh? How interesting. Those two managed to deduce quite a lot through guesswork alone. भाई मैं बता रहा हूँ फटू से हैं वो दोनों। अरे यार ये चार्जर की तार थोड़ी उधर से कर देता हूँ मैं। So the Gese got it right? सही बात है। They guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. जैसे ये डिफ़ॉल्ट मैसेज क्या आता है, वेल्किन मून राफेल इज गोइंग ऑन फॉर व्यूवर्स, यूज राफेल 125 टू एंटर द राफेल, ईच टिकट कॉस्ट 100,000 मोरा। ये खुद बताता रहेगा कैसे करना है रिडीम। Conversation you three are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Anyone else joining or should I start? बाय द वे गाइस, ये हीस्ट कमांड जो है इससे ना कुछ मतलब व्यूवर्स एक साथ टीम बना के हीस्ट पे जा सकते हैं फॉर हंटिंग मोरा, जस्ट लाइक तुम लोग ट्रेजर हंट पे जा रहे हो खजाने के लिए, उसी तरह। What makes you think we're talking to each other? काश मुझे ये नहीं पता होता कि बैलेडियर को पता है, बट भाई किसी ने स्पॉइल कर दिया। Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. इसे पता है भाई, जब ग्रुप से बाहर जाके लोग बात करते हैं तो उसी के बारे में करते हैं। We have every right to keep certain things confidential. Ouch. उसने बोला मुझे भी बताओ ना, इसने कहा निकल। Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. सही बात है। So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait, how did you know about that? Didn't Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. इसे पता है हम लुमीन को ढूंढ रहे हैं, और मुझे पता है लुमीन से मिल चुका है। Ahoy, ready Captain Inni. A crew of pirates and riders check their क्या लिखा है कुछ भी and sharpen their cutlasses as they छोड़े यार, क्या करूँगा मैं पढ़ के। So where is the ending? आएगी ending? Streamlabs नहीं पता क्या? Every conversation with you is hard work, but your attitude is better than I thought. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. सही बात है। Huh? Wait. ये क्या चीज़ है? This light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. अच्छा, जैसे तुम लोगों ने उसे बताया तुम क्या बात कर रहे हो? Just wait. ओके, कुछ तो तगड़ा कट सीन आने वाला लग रहा है। Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all.
It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. It's... काफी epic cutscene था. That name, Neva, was the man in charge of the Tarasuna. Plus, he belongs to lineage of Shenard. ये क्यों चिल्ला रही है भाई? Bro, Streamlabs not giving back my... क्या करेंगे अब इतनी धनराशि का? The Tarasuna was tough quest though. True. Okay. I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Oh, unique design. Also not giving back my Mora. I think we lost the haste. Yep. When does the haste end? Haste end. भाई आई रिमेंबर चार्ट में कोई तो था जिससे मतलब हीस्ट वाला कमांड आता है चलाना. मैंने ना इसलिए ये डिस्क्रिप्शन में हीस्ट का नहीं डाला है कि पहले मैं खुद देखूँ काम कैसे करता है. आई एम नॉट श्योर भाई हीस्ट कैसे काम करता है. बट आई नो कोई तो था भाई उस दिन चैट में जो पूरी हीस्ट मैनेज कर रहा था यहाँ से. रीड चैट प्रीवियस. इट यूजुअली एंड्स राइट अवे. इफ अगर एंड नहीं हुआ है तो शायद दैट मीन्स कि तुम लोग हार गए हो. और हीस्ट पे भी काउंटडाउन है. एकदम से दूसरी हीस्ट चालू नहीं होगी. तो या मैं तो कहता हूँ भाई हीस्ट अभी रुक जाओ. एक बार मैं थोड़ा उसमें देख लेता हूँ हीस्ट काम कैसे करता है. फिर ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा स्ट्रीम के. उसमें ना कुछ सेट ऑफ कमांड्स डालने पड़ते हैं तो मैं बार बार. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place. Like a giant village. People are gainfully employed. Their lives have purpose. They are motivated. Yes, motivated. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. Crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Some world-renowned, others unknown, all passing on their legacy. भाई इसकी आवाज कितनी मस्त है जो नरेट कर रहा है. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Jago Hill. Buy raffles, bro. For me, don't just gamble. For me, it's different. सही बात है भाई. Slime कह रहा हूँ मैं. Deadshot is like the chosen one. उसके कोई भी गैम्बल फेल नहीं होने. मैंने कौन सी चार्ट मिस कर दी. स्लाइम. That's why I gamble because I want all 5 raffle tickets, but now I can't do anything. Okay, slime कौन सी चार्ट मिस कर दी मैंने. स्लाइम रेट चैट प्रीवियस. ओके तो मैंने वो वाला चार्ट मिस कर दिया स्लाइम का जिसने स्लाइम ने लिखा है कि मैंने एक चार्ट मिस कर दिया. अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं. तारासुना वाज अ टफ क्वेस्ट. तो ये तो मैंने पढ़ लिया था स्लाइम. और कुछ इसके पहले. कम फ्रॉम आउटसाइड बट नाहिदा टोल्ड ट्विन इज फ्रॉम दिस वर्ल्ड. हाँ भाई यही बात तो समझ नहीं आ रही है. दोनों ट्विन्स तो साथ में आए थे. आई गेस यही वाली चैट थी ना. इफ अगर और कोई तो बताना मैं और ऊपर स्क्रॉल कर लूँगा. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. At least not on the same timescale. Guys, heist वाला command try at your own risk. Because मुझे नहीं पता है वो काम कैसे करता है अभी. मुझे पहले देखना पड़ेगा तभी मैं समझा पाऊँगा कैसे काम करेगा वो. बाकी यार मुझे याद नहीं आ रहा. कोई तो था भाई जब हमने फर्स्ट टाइम ये कमांड यूज़ किया था चैट में जिसने मुझे बताया था इसके बारे में. रुद्र था, निधीप था, डेडशॉट था. यहाँ उस टाइम और भी लोग थे. Every piece of ore here is smelted using I am the fifth technique. combo.
Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. I believe it is you, sir, who are truly responsible for the changes in our manufacturing and forging methods. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma. And it has been my great honor to befriend you all. ये दोनों हैं कौन भाई? Gamble 20+11 भाई क्या चाह रहे हो तुम? स्ट्रीम लव्स छोड़ के चला जाएगा भाई स्ट्रीम. Joining Heast नहीं start. So you say, Escher. But is this Hey Asher, you are on game finally, man. My good sir, what do you mean? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. भाई मैं साथ में डिनर कर रहा हूँ तो भाई अगर किसी को कुछ आवाज़ आए चबाने की तो जस्ट इग्नोर. यहाँ ज़्यादा अनोइंग लगे तो बता देना, मैं म्यूट कर लूँगा चबाते हुए. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up. Gamble continuing to rise Silver. at an alarming rate. भाई ये सही मेरी स्ट्रीम पे आके मुझे ही गैम्बल कर रहे हो. नाइस. And recently, भाई किसी ने क्वेस्ट किए तो मुझे बताना. ये मैं स्किप कर दूँ तो कोई मेजर स्टोरी तो कुछ नहीं छूटेगी ना इसमें? क्योंकि मुझे ना मतलब नॉर्मल एनपीसी नहीं लग रहा है, कोई हिस्ट्री से रिलेटेड है स्कारामुश की. स्ट्रीम लैब्स अगर पैसे ना दिया ना भाई ब्रो मैंने बोला है ट्राई एट योर ओन रिस्क, इसमें जा सकते हैं मोरा सबके. आई वोना हीस्ट आई रिमेंबर. Is taking the golden feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. सही बात है भाई. मैं ना ऑटो ऑन कर देता हूँ. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. है ना एशर? Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? नशा करके आया है वो. I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does things by the book. भाई पूरा एनिमे का वाइब देने की कोशिश की है यहाँ पे. Son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine. Are you sure you're not a little overqualified? Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached duel to चल my रही है चैट में, क्या बात है? Nini won duel. Congratulations. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. सही बात है. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? इसकी आंखों में देखो ये बंदा मरने के लिए तैयार है. You don't seem to trust me. भाई किस्मत कर लेना. फैमिली फ्रेंडली स्ट्रीम है भाई. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? When giveaway ends. Bro मैंने सोचा गिव अवे का रैफल ना ओपन रखते हैं 2 वीक्स के लिए ताकि सबको फेयर चांस मिले टू अर्न मोरा. एंड फिर लेट्स से आज क्या है हमारा? आज थर्सडे है तो नेक्स्ट वीक का एक थर्सडे जाने दो और उसके अगले थर्सडे में कर देते हैं गिव अवे. लेट्स सी या तो नेक्स्ट थर्सडे अगर और लोग आते हैं तो फिर नेक्स्ट थर्सडे. 2 वीक से ज़्यादा नहीं करूँगा मैं.
आई जस्ट वांट सबको फेयर चांस मिले, मतलब जो एक्टिव भी नहीं है और उन तक न्यूज़ पहुंचे गिव अवे की, तो उनके पास भी चांस हो मोरा अर्न करने का। वो तेरी वैसे मरने को तैयार था। Like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. भाई ये तो सही में आने में मोमेंट लग रहा है। अरे मैंने ऑटो स्किप बंद कर दिया। You know how much I am rich. You have 3000 Mora. भाई सब पढ़ो पीछे डेड शॉट के, सब उससे डुएल करो, निकालो उससे मोरा। मारे डाला। You're a little smarter than I initially gave you credit for. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Long time बाजू में तो है। Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, Let's you go, still Nidhi. fail to realize my 900 true Mora. identity and what I seek in Tatarasuna. I'm never Did you gambling, really only think duel. you would be able to see through my plan? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? भाई इन दोनों कैरेक्टर्स में इतनी मतलब स्टोरी है जितनी पूरे गेम में नहीं है। गिव सिल्वर प्लेस 1 मोरा भाई, शाबाश। नहीं, रिसीव्ड 1 टिकट, क्या बात है भाई। Oh, but you're quite wrong. There is one other person. Some may There not is see one other him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. ये भी पपेट है। You see how much, ही तो मैंने पढ़ लिया था। Slime, you received 3 tickets, क्या बात है। Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you really trying to accomplish by all this? Why go to all this trouble? It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. If you must know, I'm happy to divulge my true identity. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. उत्तरी Fatui? Who? What do you want? डॉक्टर इतने टाइम से Just जिंदा to है। create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. भाई साहब अच्छा है मैंने स्किप नहीं किया ये। गैम्बल 100 मोराज जॉन्गली मोमेंट, परफेक्शन। It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? ओ बेटी स्कारामुश का पहला फ्रेंड है। My heart. Tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing
to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only people like you. कौन है भाई? इतने सीरियस सीन में किसने गम्बरे चला दिया? डेड शॉट. सिल्वर ब्रो, हाउ मच रैफल आई गॉट? पता नहीं भाई, चेक करके देख लो रिडीम करके. अगर नहीं आ रहा है तो 5 कर लिए होंगे अब तक. रॉन्ग टाइमिंग, बहुत गलत टाइमिंग भाई. वो मार रहा है उसको, ये गम्बरे गम्बरे जैन भाई. लगे रहो लगे रहो. बाकी मैं देख के बता दूंगा अभी राफल किसके पास कितने हैं. एक बार मैं मतलब ये स्टोरी एक बार ख़त्म हो जाए यार. क्वेश्चन भी आंसर करेंगे, वो भी देखेंगे. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What a pity. पिटी की बात मत करो भाई इस गेम में. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. भाई ये डोटोरे इच्छाधारी नागिन है. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. शाबाश. रैफल नॉट वर्किंग. हाँ ब्रो, अगर रैफल काम नहीं कर रहा तो दैट मीन्स यू हैव 5. Hey, are you alright? Dottore. Dottore. Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? I'm afraid so. He was the one behind Tatarasuna incident. भाई ये पागल हो गया है स्कारा. अच्छा, रिडीम इमोशनल डैमेज. Emotional damage. भाई डेड शॉट के मजे इतने मोरा है ना डेड शॉट के पास. But why do we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. This betrayal was a lie. अरे यार इस ऑटो स्किप बंद करो, मैं इसका डायलॉग नहीं पढ़ पा रहा. If the betrayal never happened, it existed only in his imagination. But where does this leave him? Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. I came here with 0 Mora and got 5 tickets. Bro, you duel na? Duel भी तो किया ना? He used to be. तो क्या डेड शॉट, वो मतलब बंदा 2 सेकंड में 80,000 मोरा लेके बैठा है. भाई मैं कैसे लूँ सीरियसली इस स्टोरी को. अगर ऐसे स्टोरी चलती रहेगी यहाँ पे.
Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Okay, let's go over there. We need to give him some time to process his emotions. Diya time. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart to the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." He took it straight from the chest of one of his innocent servants. The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. He thought Niwa had completely betrayed him, and yet this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. Being betrayed and abandoned by a close friend is sure to cause great resentment. Now we know what was behind his decision to take revenge on the ride in Gokuden. But it doesn't mean that vengeance was the right decision. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. Tottori, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. इतना बड़ा गलत हुआ भाई बंदे के साथ. मतलब कितने साल से डॉक्टर ने इसका काट दिया? A while later. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. सही में भाई. ये क्या Are स्माइल है? you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. We just want to make sure this doesn't affect the plan. It won't. I'll keep my end of the deal. Bro, that question I posted. Hey, Read chat. are you investigating the stuff we want to know about? फिर कुछ मिस हो गया क्या? यार मैं स्टोरी में कुछ ज़्यादा ही इंडल्ज हो चुका हूँ. ओके, थोड़ा सा मैं यहाँ चैट में देखूँ क्या चल रहा है. रीड चैट. Redeem ayaya. My luck's come all at once. Give me 500 phone pay. I'll give you 5,000 Mora. भाई क्या चल रहा है ये? धंधा बना लिया तुम लोगों ने तो. Bro, I didn't need Mora though. If I got 500, I'll but Welkin myself. गजब बेचती है भाई. 500 की चीज के लिए 5,000.
That's why we're here. Yes. निकालो भाई But information. unfortunately, there's no information about the descenders in Irminsul. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the Descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Teyvat. Oh, does that mean we have to leave empty-handed? सही बात है भाई. Gamble real money जी पे. Not unexpected, but still thank you. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. Huh? About what? The reason why there are records about your sister in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was her first destination when she arrived in this world. Plus, she only came to this world because the heavens responded to the summoning. The heavens responded? मतलब? The jester told me this himself. You can take his word on this. He was a royal mage in Conria, and lived with your sister for a time. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Yes. Astonishing news. Does this Means info count towards she my got mission? isekai'd. It wasn't from Irminsul. Okay. But was it valuable? Very valuable. Smile देखो उसकी. Good. In that case, I'll take some time for myself now. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Okay. What if Genshin anime story will be about the main characters, brother or sister? उन्हीं के बारे में होगी. Protagonist तो हम ही हैं. बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो इनकी मांगा है ये पहले ही उसको एनिमेट करेंगे अबाउट वेनेसा. फिर शायद यूला की बैक स्टोरी और जो डिल्यूक की है. देन ये लोग आएंगे मेन स्टोरी पे. मतलब कंटेंट बहुत है इनके पास. नीनो नो मोरा. भाई ये गेम भी है नीनो नो कूनी करके. एनिमे भी है. बड़ी मूवी अच्छी है भाई. नीनो नो कूनी देखनी चाहिए सबको. मूवी अच्छी है. Give me your hand. अरे ये क्या करना चाह रहे हैं? क्या चल रहा है भाई यहाँ पे? Can you hear my voice inside your head? Are you trying to brainwash me? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. So tell me, in this world, is it possible to change the past? भाई ये तो सीधा मतलब की बात पूछ रहा है. सीधा पॉइंट पे. ये बंदा घूमा है दूसरी दुनिया इससे पूछते हैं. बट आई गेस पॉसिबल नहीं होगा. टाइम बैकवर्ड नहीं जाता. क्या चल रहा है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर राइडन इन गेंशिन. भाई वो मैं बता रहा हूँ जिस दिन वो एपिसोड आएगा ना सारे रिकॉर्ड्स टूटेंगे. जिस दिन शोगन का एपिसोड आ गया. शोगन इस मतलब सबसे कूल कैरेक्टर है इस गेम की. सबसे कूल. नो मोरा बट 5 रेफर. द ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज. यार मुझे देखनी है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज. काफ़ी लोगों ने बोला है बट शायद एंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा इमोशनल है जहाँ तक मैंने सुना है. सिल्वर इज लाइक व्हाट. ओ सॉरी मतलब ट्रैवलर इज लाइक व्हाट. वेट व्हाई वुड यू आस्क दैट? Done. ये क्या था? आंसर तो सुन ले भाई. सो सैड एंड इमोशनल. हाँ तब मैं थोड़ा सा दूर हुआ क्योंकि मैंने अभी ना फेट के फर्स्ट 3 सीजन्स ख़त्म किए हैं. जब भी मैं कोई ऐसे एनिमे देखता हूँ ना जिसमें एंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा वो सैड मतलब कैरेक्टर से कनेक्ट करके एकदम ख़त्म हो जाए मैं तब उस पर शिफ्ट हो जाता हूँ वेब सीरीज़ पे.
एंड जब वेब सीरीज से मैं बोर, आई एम बैक टू एनीमे. Huh? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. समझ जा पाइमॉन. Nothing. I was just thanking him for helping me. वो बता देगा पाइमॉन को. वन पीस. यार वन पीस भी देखना है मुझे. एक दिन स्टार्ट करेंगे, ज़रूर करेंगे. वेट, दैट लुक, डिड ही सी मी hesitate? But that was because I know about Greater Lord Rukh Devta. Watch overflow. Uh-oh, I think... So long. अरे यार. I suggest you get yourselves out of here quickly. और कैसे जाएं बाहर? Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Balladeer, stop. Paimon, we have to stop him. Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. Oh, man of culture, I see. It's such. I know, bro. मुझे एक बार ये बंदा भेज चुका है देखने के लिए ओवरफ्लो. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. How? Suicide कर लिया बंदे ने. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! भाई कितनी सैड स्टोरी है ये. I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Well, he's gone. Oh no. Ouch. He's really gone. Oh, can you hear me? Nahida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had? Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Sorry, Nahida. Someone answer this. Paimon, where will you find him inside internet? ये नाहिदा आर्कॉन है, इसको कुछ और काम नहीं है क्या? यहीं बैठी हुई है. इससे अच्छा तो अंदर ही आ जाती है. Nini, you can add maybe. Yes, Nini, you answer your question yourself. DIY. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. Strictly yes or no, then you answer me. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. भाई निनी ने क्वेश्चन किया, निनी ने रूल्स फिक्स किया, अब निनी को ही आंसर करना पड़ेगा. Or someone can leave it blank too. And guess what? Blank is the endgame name of Nini. We're out! And we're at, an inn or something? This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. No, I want to help you. Isn't there anything I can do? I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me.
Okay, today Mora done. Silver bro, read before chat. अभी पढ़ता हूँ. चलो सिल्वर ब्रो, कल मिलते हैं. Hey, bye जय. Thanks for joining in today's stream. मिलते हैं कल. जय गोहिल, you won the gamble. क्या बात है. क्या मिस किया मैंने? It's अरे यार चार्ज से निकालो. चार्ज में लगा के स्क्रीन पगला जाती है. It's strictly yes no. नहीं कोई भी चार्ट नहीं है भाई. इसके पहले पढ़ लिया मैंने. Yeah bro, even I need to go. Good night everyone. Hey, good night Nini. Thanks for joining in stream man. And all the best भाई जिनके भी एग्जाम चल रहे हैं. An emergency? How bad is it? Nagita, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here until I say it's safe. Okay. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? ये क्या करोगे अपनी आईडी ग्राइंड करके मेरी आईडी ग्राइंड कर दो. नाइस. गेट गैम्बल. अच्छा जाते जाते गैम्बल. Paimon doesn't remember Greater Log Trukdevta and the Balladeer question was a strange one. It hurts to explain in full, but the truth might be very... I'll skip the part where that is my problem. About Rukdevta for now and focus on the Balladeer. Okay. मैंने कहा था बता देगा ये. To change the past? But surely that's impossible. It's not easy, that's for sure. Right. You can't just rewrite history. All that stuff happened already in real life. सही बात है. मत करो अपनी आईडी ग्राइंड. सब मोह माया है. True bro. It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it. Okay, so now we are discussing time traveling in Genshin Impact. मैंने बोला था भाई टाइम ट्रैवलिंग तो आएगी ज़रूर इसमें. So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. ये स्ट्रीम लैब्स को समझा लो. या समझाओ भाई. Paimon's so confused. Maybe he wants to erase himself from history. ओ भाई ये तो काफी गलत हुआ. Paimon, are you okay? Sorry. Paimon accidentally... It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. हम बोल रहा 50-50 हारोगे बस जी पर नहीं. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? But not necessary, but maybe. I'm just guessing here. Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. Ugh. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. Say about it. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? Indeed. If the Balladeer does erase himself from Irmin's soul, many people in Inazuma will be affected. I can't imagine what situation would look like.
Worst case scenario, it will affect everyone with a connection with the ride in Gokuden. Kazuha Ayaka Ayato. Will this mean they'll disappear? There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Imagine भाई वो कर दे कुछ जाके सारे प्लेबल कैरेक्टर जस्ट वन थानोस स्नैप हो जाएंगे सब. आर्चाइव मेन फिर बोलो होगा वो. यार मेरा बिल्कुल मन नहीं गेम खोलकर कमीशन करने का. आई फील यू डेड शॉट. मेरा भी कभी कभी नहीं करता, मैं छोड़ देता हूँ लिटरली. पहले तो मैं करता था भाई रेगुलर, बट अब जब होता है ना बिल्कुल ही मन नहीं करा, मैं नहीं करता यार. Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. बाकी अभी की बात रही तो ये तो बस माइंड रिफ्रेश के लिए मैं खोल लेता हूँ भाई. दिन भर पूरा बिजी रहता हूँ मैं, रात को यही रिफ्रेशमेंट है मेरे पास. So, how about we list all our favorite foods to take our mind off things? Heck, if that doesn't work, Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. इन्हें भी एंजाइटी हो रही है. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. Sauteed matsutake. ओके चेस की स्ट्रीम करो कल से, थोड़ा आईक्यू बढ़ाएंगे. भाई मैं बहुत बुरा हूँ चेस में, बट स्टिल विल बी इन आर्चाइव. ओके अरे हाँ, अगर वो एरियस कर भी दे खुद को आर्चाइव में रहेगा. ओके आई गॉट इट नाउ. And Dragon chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. Oh. Also, Adeptus Temptation. Golden shrimp balls. Triple layered consomme. Lotus seed and bird egg soup. And... कंट्रोल 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 भाई कंट्रोल. He will be in trash bin. That is recycle bin. Paimon, what's wrong? What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon, stop or we'll make you emergency food. Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. What was it again? You were getting so worried about situation with the balladeer that you started listing foods. The balladeer? Shit. Is that a food too? Huh. Weird name though. Shit. Fuck भाई. हिस्ट्री चेंज हो गई भाई. शक्ल देखो इसकी, अभी मेरी शक्ल है भाई साहब. Paimon doesn't remember Balladeer. That must mean he actually pulled it off. But how did he have the ability? This doesn't make sense. Who's Rim Balladeer? What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? No, it's nothing. So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Who's Rem? Rem? भाई रेम तो उसमें कैरेक्टर है ना, वो कौन से एनिमे है जिसमें वो लड़का मरता है टाइम रीसेट हो जाता है. कुछ तो नाम था शो का, मैं भूल गया हूँ. उसमें थी एक रैम नीले बालों वाली. स्लाइमी डोंट नो हुज रैम. गेम में है क्या कोई रैम? हाँ, री ज़ीरो. इफ दिस इज रियली हैपनिंग आई नीड टू नो व्हाट एल्स हैज चेंज्ड. पाइमॉन कम विद मी. Okay, sure. Where are we going? आई वांट टू गो बैक टू इनाजुमा. शिट. Fine by Paimon, but ओके, अब हम इनाजुमा is जाएंगे. everything okay? शोगन से You're acting like पूछेंगे. This is an emergency. चल के देखते हैं भाई आया का गायब तो नहीं हुई. बाकी सब जाएं भाड़ में.
नहीं आया तो भी ना जाए भाड़ में, यो मियाँ भी, बाकी सब जाए भाई भाड़ में। शोगन भी नहीं, शोगन कैसे चेंज होगी, शोगन नहीं तो इसको बनाया है, शोगन तो होगी। आई हैव नॉट वॉच डेथ नोट, वाई ब्रो? देखो भाई, डेथ नोट मतलब सबसे एपिक एनिमे है भाई, हर एपिसोड में मज़ा है, मतलब उस एनिमे में एक भी फिलर एपिसोड नहीं है, सारे कैनन। एक भी एपिसोड ऐसे नहीं जो स्किप कर पाओगे भाई, मैंने तो देखते ही ख़त्म कर दिया था एक दिन में, रुक ही नहीं पाया मैं। कैरेक्टर आर्काइव चेक कर लो। हाँ देखूंगा अभी मैं। स्लाइम यहाँ क्या कर रहे, डेथ नोट देखो। मतलब वहाँ पे आर्काइव में कुछ चेंज हुआ है ना स्लाइम? Pardon me, I'd like to ask a question if I may. Of course. Go ahead. About Raiden Gokuden. Could you tell me the story one more time? Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. म्यूज एशिया पे नहीं है वो, तो क्या हुआ ब्रो? इतनी सारी वेबसाइट्स हैं देखने के लिए। लाइक एक वेबसाइट में बताता हूँ, 9anime.gks, वहाँ पे सारे एनिमे मिल जाएंगे। इवन एक और है xoro.to, फ्री में एनिमे मिल जाएंगे वहाँ पे। गूगल पर खोलो भाई, गूगल का भी मत करना एनिमे, इतनी मतलब फिशिंग वेबसाइट्स आती हैं, कोई वायरस वगैरह आ जाएगा। ओनली लीगल नेटफ्लिक्स, क्रंची रोल, लीगली तो वहाँ पे मिलेगा। The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches: Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. ओनली लीगल भाई, क्रंची रोल में भी ना सारे एनिमे नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम होते हैं, सारे नहीं है क्रंची रोल पे। क्रंची रोल बिगेस्ट स्कैमर्स। क्यों भाई, क्या हुआ? The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Okay. 2 accounts banned for using VPN. भाई साहब, पता है ज़्यादातर लोग ना ये मतलब इन वेबसाइट से क्यों देखते हैं, ऑफिशियल सोर्सेस से नहीं। वो काफ़ी इजी है भाई, मतलब क्या कहते हैं, मतलब वो काफ़ी एक्सेस इजी है उसका, क्योंकि कहीं एक जगह तुम पे करो वहाँ सारे आने में, नेटफ्लिक्स पे सारे नहीं मिलते भाई, क्रंची रोल पे नहीं मिलते सारे, और कोई सर्विस है तो मुझे पता नहीं है, बट आई गेस एनिमे के लिए यही 2 पेड सर्विसेज हैं ढंग की। नहीं तो देखने को डिज्नी प्लस पे भी मिल जाएगा, पर वहाँ पे कुछ भी नहीं है, एनिमे के नाम पे बस 1-2 डाल रखे हैं। Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. Crunchyroll used to be pirated website. अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। Fortunately, Kaede Harakazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. सही बात है। Oh yeah, we were! Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then too. It seems like such a shame. It's not pirated, it's not available in India. I guess it used to be, no? I guess so, it used to be, huh? What was the reason behind their decline? Balladeer. That, my friends, is a tragic tale indeed.
In fact, this was not made known to me for most of my life. What the hell? All these 91,000 years, Mora dead shot? I knew of those great clans' demise, but Okay, never we'll the watch. cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. This is not power of your creation. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokunin, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokunin were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? This is the power of God. 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphaned son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. Shit, history change हो गई है. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokunin. In doing so, he sought to vent his pent-up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. Lend Silver Play 69 Mora at 12% interest. Shark Tank चल रहा है ना यहाँ पे. In his fury, he murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged to. His goal was absolute, the devastation. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan For your and their YouTube's Ishin 1% art equity. survived that day. भाई 1% में I भी कुछ नहीं suppose आएगा. they चैनल were the lucky मोनेटाइज नहीं है मेरा ones, अभी. under the dire circumstances. The legend of Raiden Gokunin has changed. Someone else attacked the swordsmith. Looks like the ballad did something in Erman's soul, but it seems Niwa still died. Lol. Lol नहीं मतलब sad. 101 sub. अरे क्या बात है. कभी कभी ना अपडेट नहीं होता है स्ट्रीम में जो मैंने बार लगा रखा है. मे बी क्योंकि यूट्यूब ना वेरीफाई करके भेजता है सब्सक्राइबर्स. जब वो वेरीफाई हो जाते हैं तब काउंट होता है वो. हैव यू सीन काजुहा रिसेंटली? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. So he still exists and he's same Kazuha I know. Things don't seem as bad as I feared last night.
That's all. Thank you. My pleasure. अरे आया तो योई मियाँ सबको देखो भाई. Don't tell Paimon. YouTube. Right? Nice. Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. कहाँ जाएंगे? याशिरो कमीशन. भाई एक प्लेबल कैरेक्टर तो दिखा दो. एनपीसी से ही बात करेंगे क्या? भाई ना जूम है यहाँ के आर्कॉन लेके घूमेंगे हम. We're here. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. Hello. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. चलो वो दोनों भी हैं. Shut up emergency food. मैं तो बोलता हूँ 1 लाख पर कर दो वेल्किन के वफे. भाई बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा. The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's अच्छा 1 लाख मोरा. you're welcome I to thought wait inside subscribers. until they get back. एक लाख मोरा नहीं भाई. 1 लाख नहीं करेंगे. 3 लाख मोरा पे वेल्किन क्लेम डालूंगा मैं. What do you think? Shall we go in? Thank you. We'll take you up on that offer. Finally. Can we take a walk in the courtyard? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. 1 लाख गैम्बल की लिमिट रख लो भाई. लिमिट अगर मैंने 1 लाख की लगा दी ना तो मतलब वो 1 लाख मोरा जब तक नहीं पहुंचेगा गैम्बल नहीं कर पाओगे सब. सोच लो. मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है उसमें. विल बी हेडिंग इन देन. थैंक्स. चलो भाई. मेरा कीबोर्ड काफ़ी दूर है. Hello, dears. Is there something you want to say? Ma'am, can I ask you a couple of questions? Do you have a credit card? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. तो मतलब मैं 10,000 से ज़्यादा गैम्बल कर सकता. 10,000 से ज़्यादा गैम्बल कर सकता. मैं कह रहा हूँ. अच्छा हाँ मैक्सिमम लिमिट. What would you like to know? ट्रू. 10,000 से ज़्यादा नहीं होता ना. How are the Commissioner Kamisato these days? Oh, they're both very well indeed. मेरे ख्याल से 10,000 लिमिट है मैक्स की. Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although he does So pretty much very. As far as I can see, nothing changed in the Yashiro Commission either. I was expecting as much, but it's still a big relief to know that Kami Sato siblings are both fine as well. Well, got any more questions? That's all for now. Many thanks. You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. अरे भाई मैं आ जाऊँगा रोज़. बुला के तो देखो. Miss Kamisato talks about you all the time. She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. ये नहीं बताना था फुरूता. ये तो राज खोल रही है उसके.
स्लाइम 8 बॉल से कुछ पूछो. I must say, many How? things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. ध्यान से देखो, ये बंदा भी ब्लश कर रहा है. I mean it. ऊपर देखो, स्ट्रीम लैब ने बताया है. नहीं, डेडशॉट करके बताओ. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. न्यू 4 स्टार कैरेक्टर कैसी है? कैसा है, नहीं कैसी है, लड़की है वो. भाई न्यू 4 स्टार कैरेक्टर जो है ना, वो मतलब समझ लो एनिमो कैरेक्टर के लिए बैनेट है. जितने भी तुम्हारे एनिमो डीपीएस कैरेक्टर होंगे उन्हें वो तगड़ा बफ देगी. तो मेनली आई है स्कारामूश को बफ देने, ये मान लो. और कैरेक्टर बहुत तगड़ी, मतलब अगर तुम्हारे पास एनिमो टीम है वो तुम्हारी टीम में होनी चाहिए. बहुत तगड़ा बफ मिलेगा भाई. ये तो बस बोलता रहता है. एक्सक्लेमेशन करके 8 बॉल लिखकर कोई क्वेश्चन पूछो. वेंटी कर दूं फिर डीपीएस. गो फॉर इट ब्रो. The commissioner Try has करके such पता a लगेगा. busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home. But given the opportunity, he always prefers to dine here. They Toma भी say है. it's because Toma is a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. ओके, स्लाइम ने पूछ ही लिया सवाल. वाई आई लॉस 50-50. 8 बॉल सेज डाउटफुल, नहीं पता. देन दूसरा बॉट कहता है क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर लगते हो. ये तो फ्लर्ट करने लग गया, लगता है इसे भी स्लाइम पसंद है. ये भी ठीक है. They get to talking about you sometimes too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. भाई साहब ये क्या आवाज़ है. वंस मोर 8 बॉल वेल्किन मुझे दे दो. It's been many years now. वो तो पता नहीं, पर एक बात पता है, तुम बहुत प्यार Mrs. Kamisato passed away. Much Ow. has happened in the Kamisato clan in that time. सिंप भाई 8 बॉल तो स्लाइम पे फिदा हो गया है भाई. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, Slime it makes simp. me so in the future, if you ever do have the time, wonderful. Haima likes it here too. Also, you were saying something about the food here being really great. हाँ, आजा काम की Itching बात to पे. try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course, you're always welcome. बुक्कड़ पाइमॉन सही में भूल गई इसका रामोश को ये. Where are we going next? तातारा सुना. Great! Goodbye, ma'am. Don't worry, we'll see ourselves out. 8 bot when will you 8 ball when will Hydro Archon come? Don't bet on it. क्या खूब लगता है भाई. कहाँ अटक गया ये डेड शॉट भाई. तू कुछ पूछ के देख भाई. All right then. Take care now. Hope to see you soon. ये क्लिप काट के ना मैं गाना बना सकता हूँ इसका. All right then. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well.
Safe travels. Goodbye. मैं नहीं पूछता बेइज्जती कर देता है 8 बॉल बाई डेड शॉट की. गो टू तातारा सुना एंड लुक फॉर क्लूज. भाई मैं सोच रहा हूँ इतना सब हो गया बैले डियर का, ये औरत कहाँ है जिसने उसे बनाया है भाई? इससे कोई कुछ नहीं पूछेगा. इससे कोई कुछ नहीं बोलेगा. सब ये भी भूल गए इसने पूरा इनाजुमा की लंका लगा के रखी थी. 8 बॉल ठंड क्यों है बेटा? तुमसे ना हो पाएगा. might actually bet yes, might actually be yes. ओए ओए डीमन, क्या हाल चाल? सिल्वर, हाँ भाई आगे तो बोल. डीमन भी आ गया आज भाई. डीमन रोज आता है, वो गैम्बल करके चला जाता है. डिस्कॉर्ड डिस्कॉर्ड भाई, एक बार एक क्वेस्ट खत्म हो तब आता हूँ. सेवियर Well, here we are. But what Hi. are you looking for? अभी Something? भाई रुक जा भाई, क्वेस्ट खत्म करके आ जाऊंगा मैं जल्दी. भाई खत्म करके आ रहा हूँ मैं. Eyes deceive me, or is that the traveler in Paimon? Xavier? Okay. What are you doing here? भाई एक सेवियर होता है वो, सावियर. I was in the general area, and now I'm in this डीमन specific area. देख इतनी There, स्ट्रीम that's देख me. कर So, what मोरा about you two? इकट्ठी की है, कोई इज्जत ही नहीं है. We have some questions and thought you might be able to help. Do you know about तातारा सुनो? Certainly do. I've researched the furnace here, and if there's यार anything you प्लेबल want to know, कैरेक्टर्स नहीं just मिलेंगे तो ask मैं away. स्किप मार रहा Like हूँ. the back of my- not only क्योंकि टू that, बी but ऑनेस्ट I've बस met यही है people कि in- हिस्ट्री Oh, चेंज I'm नहीं told हुई that है. its history is one of them. A couple? One was just in the. They say he was a. Hey, weren't you gonna ask Xavier something about the डेड शॉट ये देख Come on, ask भाई. him. डीमन तो मानेगा नहीं, डेड शॉट ने गैम्बल कर करके 1 लाख के करीब पहुंच गया था. Oh, I didn't डेड realize शॉट ने you भाई were here for कमाए a हैं. history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Pretty much so I can ask Wake one up more today? question. Sure, go ahead. A kabuki. I do know the word, but skip skip sadly, skip 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 भाई perfect 90,000. Thank you savior. Of course. सेवायर Oh, you're क्या बोली थी वो? farewell. बाय बाय निकल चल. यार कोई प्लेबल कैरेक्टर से बातचीत नहीं है क्या? Information you're looking for. टाइम टू गो बैक एंड सी लेस लॉट को सुना ली. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. नहीं मतलब योइमिया के बारे में इसको जानना ही नहीं है. वो गायब हुई कि नहीं हुई ना, शोगन से इसको कुछ पूछना है बैलेडियर के बारे में. Smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. स्पाइनो क्रोकोडाइल भाई साहब. फोन पिक कर ले, दोनों करते हैं चैट. नहीं भाई मैं बस ये ख़त्म करके फिर आ जाऊँगा. Keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. All right. सही है भाई. इधर से उधर एक दूसरे नेशन में कुदाते रहो बस. मुझे इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा. इसने पूरे इनाजुमा की लंका लगा दी भाई. स्कारामोश को इसने सबसे पहले निकाल के फेंका. हद है भाई. डीमन 8 बॉल से पूछियो कुछ. हाँ डीमन एक बार पूछ के देख भाई, कुछ तो पूछ इससे. सिम्प. अच्छा नहीं, इस बार जंप लिखा है. ना 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 स्लाइम. बिल्कुल नहीं. एट बॉल ये सिल्वर इज सो स्टूपिड. वो तो नहीं पता पर एक बात पता, तुम बड़े प्यारे हो. द 8 बॉल सेज आई डोंट नो केफ. ओके कहाँ है कुसुनाली? Hey, इसकी it's सुई them. अटक गई है. अकाबा. भाई यहाँ का म्यूजिक काफी एपिक है. You're still here? मेरे बोलते म्यूजिक बंद कर दिया इन लोगों ने.
we are. अरे यार skip skip What's the skip skip same skip topic? skip skip Looking skip for more skip skip. info about Tatarasuna, huh? Unfortunately, we haven't made any. अरे मैं real समझ गया भाई, progress. हिस्ट्री चेंज हो गई है. नहीं 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 मैं नहीं पढ़ रही I है. presume you'll want to read my... ना, not interested. बेइज्जती कर दे 8 बॉल की डीमन. Well, what do you think? मास्टरपीस. Remember how last... What did you find out? It's a long story. Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this... Ugh. This new information... Yes, okay. And they're back at it. These guys are really into this. We've got some things to take care of. Bye for now. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. You're welcome. नहीं कंटिन्यू में वैसे भी जा रहा था भाई. लग रहा है आर्कॉन क्वेस्ट तो आज ही खत्म हो जाएगी. भाई मेरे राइट कान में क्या आवाज़ आ रही है? अच्छा इस चिड़िया की आवाज़ है. कितनी प्यारी चिड़िया थी, अब टेस्टी भी हो गई. चलो भाई, सैंक्चुरी ऑफ सुरस्थाना. Slime, you have 100 Mora. Foul, no. कोई नहीं. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? कितनी प्यारी थी, अब पेट को प्यारी हो गई. Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting and chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. I was investigating the situation with the balladeer. The balladeer? This sounds like some kind of code name. लेग पीस बन गया. भाई नाहिदा भी भूल गई. Shit. Oh no. You look troubled. Is there something you need to tell me? Even Nahida doesn't remember, just like last time. Any changes to Urman's soul affect her as well. Balladeer acted quickly. He finished erasing himself before Nahida could stop him. क्या आर्कॉन बनेगी रे तू? सेम इमोशंस है मेरे डेड शॉट. भाई मतलब अर्मन सोल में कुछ चेंज कर दो तो इस दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाएगा. I'm the only one who still remembers the things that were erased once again. I am the record keeper. या फिर डिसेंडर्स को इफेक्ट नहीं करता अर्मन सोल क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही नहीं है उसमें, तो सारे डिसेंडर्स को याद रहेगा. राइट? Traveler? Hey, what's wrong? You look so upset. There are things that have happened that only I can remember. Finally अब बता रहा है ये. दबा के बैठा है 2 पैच से ये बात अपने पेट में. I have to tell you the truth. With heavy heart, story was broken, scattered across time. There once was one named the Balladeer, created by the Electric Archon. He was a puppet who lived among men. After a series of events in Tatarasuna, the Balladeer, thinking he had been thrice betrayed, left Inazuma to roam the world beyond. With no trust for humans and only loathing for the gods, he bore his grudge for years and he grew in strength. Then returned to Inazuma to take his revenge. He tried in vain to become a deity with the Gnosis and ended up losing everything. Finally, he entered Urman's soul and learned the truth behind his betrayal. Knowing now that his entire life was built on lies, he did the unthinkable in an attempt to reverse his tragic fate. That's quite a story. Sheh.
काफ़ी गलत हुआ भाई ये तो. Because he's not from this world to begin with, so it didn't affect him. Descenders. वही concept ना. Now they saying they were doing prank. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Duel Slime 300. Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond to that. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. You can say that again. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. I am not sure. We were enemies after all. I don't know his perspective on all this, so I can't say why he did something so extreme. Depressed tha bhai banda. I am too much sleepy now, so going now. Bye, Deadshot. Thanks for joining in the stream, man. Everything can be set right. It's time to solve this once and for all. Maybe that's all there. I still remember the question he asked. He asked me specifically, and my hesitation gave him his answer. I hesitated because I witnessed later Lord Rukkhadevta erase her own existence, but I can't tell Nahida that. To put it another way, I know why Balladeer was so sure it could work, but I can tell them that. Something else worrying you? Something that you can't share? I just feel empty. He chose such a radical option, and yet... It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Yes. Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that, and if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The Balladeer tried to achieve godhood with the Doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. Background music. सही में यार इस म्यूजिक के साथ ये स्टोरी कितनी प्यारी लग रही है. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Yeah, he changed the world in many ways, and yet the dead still didn't get a second chance. Those fated to a tragic end could not be saved. What exactly did he want to fight back against? The betrayals in his life, or did he wish he'd never existed Please at all? wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. ये क्या है भाई? It turns out that
I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Surprisingly, the information is presented to you resembles a fairy tale. Is this a fairy tale? Who wrote it? This matches everything I said. I authored this record myself. That's a zip file. I authored this record myself. Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. Okay. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. My mind is officially blown now. So that means Nahida have kept encrypted file. Bye. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us. The now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. Yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good.
Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. Who's the kitten? Scaramouche, of course. The new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. किटन तो भाई पक्का ही किस कार है मुझे नाहिदा की आदत है ना एनालॉजी देने की इस बार उसने एनालॉजी में पूरी स्टोरी बना दी डिफरेंट तो देयर इज नो वे कि स्टोरी चेंज हो पाए एंड द वर्ड इज चाइल्ड ओके I remember now. This is not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail. That Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own harbinger. I never had this feeling before. It feels like life is as insignificant as a feather. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahida's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come on, Traveler! You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar! That'll be sure to lift our spirits. It's a long quest, why not continue I'm the only tomorrow? one who remembers all that, but Paimon's always here to help cheer you up. Wait, abhi bhi quest bachi hai ki aur? Are you serious? Quest abhi bhi bachi hai? Let me try something really quick. Are yaar. There's a few things I'd like to look into. You should go take a walk and try to unwind. हाँ अभी भी है भाई साहब अब तो शायद थोड़ी सी बची होनी चाहिए ना ये
बट सही, इफ अगर ज़्यादा स्टोरी बची है तो फिर कल ही करते हैं इसको फिनिश। मतलब कितनी देर का और कंटेंट बचा है इसमें? कैन यू टेल मी? लाइक अगर ज़्यादा है तब तो कल कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा बचा है 10-15 मिनट का तब अभी ख़त्म कर देते हैं। ज़्यादा है, डोमेन भी है। ओके, तो फिर कल ही करते हैं इसको। और फिर 2 पार्ट में ख़त्म होगा यार कॉन्क्वेस्ट। आई गेस पहला आर्कॉन क्वेस्ट होगा जो मतलब बस 2 पार्ट में फिनिश हो जाएगा। बट है भी तो इंटरल्यूड। इंटरल्यूड ज़्यादा टाइम नहीं लेता। ओके, कितने मोरा है मेरे पास? मोरा कह रहा हूँ, प्रीमो। 2295 आई गेस इनफ फॉर 20 पुल्स। बट मुझे यहाँ पे किसी को पुल नहीं करना। ऑलराइट, लेट्स डू वन थिंग। ये जो Q&A सबने छोड़े हुए थे उसके आंसर कर देता हूँ मैं सबको। ओके, तब तक मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ अराउंड 30 मिनट्स। हाँ, तब तो यार कल ही कर लेते हैं, काफ़ी रहेगा इतना तो। 1 मिनट में सबके क्वेश्चन ही आंसर कर वो धक्का मार के चला गया। ओके, क्विट। देखिए ज़रा क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं सबने मुझसे। और ये genshin क्लोज्ड। भाई पर ये क्रोम लैग बड़ा होता है आजकल। ओके, लेट्स सी कहाँ पे आता है ये। अरे भाई, कौन छुप के स्ट्रीम देख रहा है? ओके, अब शायद मुझे दिख जाएगा। वेट, मैं शायद यहाँ पे भी शो कर सकता हूँ। अगर मैं इसे पॉप आउट कर लूँ तो इसमें कोई ऐसी चीज़ है क्या जो मुझे स्ट्रीम पे नहीं दिखानी चाहिए? डोंट नो, बट रिस्क नहीं लेने का भाई। ओके, लेट मी ट्राई। अगर मैं इसे दिखा सकता हूँ स्ट्रीम पे तो इट विल बी वेरी क्विक। अरे स्लाइम, ये क्या भेजे? सितारे। ओके, आई गेस ये जगह सही रहेगी इसके लिए। ओके, आई गेस दिस इज गुड इनफ, जितना ये दिख रहा है। तो हमें जाना है टॉप चार्ट पे। मुझे खुद को भी यहाँ से थोड़ा सा उठाना पड़ेगा। या फिर इसको इधर कर लेते हैं।
काफ़ी स्टीप दिख रहा है ना ये। लाइव चैट, इसी में कहीं आते हैं क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चंस आ तो रहे हैं छोटे से। लेट्स सी, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर सकूं तो। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, जल्दी कवर कर लेते हैं। इतने बड़े से विंडो में से क्या रह गया है भाई। तो ये रहे क्वेश्चंस हमारे पास जो पूछे हैं सबने। पहला तो मेरे दूसरे चैनल का, इस चैनल का क्या होगा भाई, नो आइडिया। स्कारा पुल किया सिल्वर भाई? नहीं किया भाई। राइडन को पुल करना है मेरी आईडी में, भूलना मत। ओके ब्रो। भाई मैं ये क्वेश्चन पढ़ने भी नहीं वाला। ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन उसका पीछा मत छोड़ना। किसका पीछा भाई? ये भी सही है। कम्युनिटी टैब में डाल देना पोस्ट। हाँ सही कह रहे हो। ये ना मैं क्लिप करके डाल दूंगा कम्युनिटी में, या सबके आंसर लिख के डाल दूंगा वन लाइनर में। सही है यार। ओके, सो ये रहे क्वेश्चंस। All right. So I guess that is it for today then. अब हम इसे कल कंटिन्यू करते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज स्ट्रीम एवरीवन। मज़ा आ गया। ऑलराइट स्लाइम, एंड जो भी छुप के देख रहा है भाई, कल मिलेंगे भाई। गुड नाइट। यस, गुड नाइट। ये म्यूज़िक एंजॉय करो, तब तक मैं पूरा सिस्टम क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। सी या।